the last few days. Congress has walked the tightrope on the Ram Temple issue, making it very clear that it doesn't seem to be siding with the hardliner Muslim organizations, but at the same time, this is also a question about the core ideology of the BJP, and what we expect is a senior minister to lead the discussions, where a variety of speakers have been chosen, including Sudhanshu Trivedi, Rakesh Sinha, and as far as Rajya Sabha goes, Finance Minister will reply there. There, Prakash Javadekar and Sushil Modi will talk about the economy of the country during the UPA regime. Remember, yesterday Nirmala Sitharaman spoke about the scams of the Congress government, talked about how investors had lost confidence in the country and how all these scams had actually even forced the Supreme Court to intervene and had led to a cancellation of a lot of licenses, especially in coal mining and telecom. So clearly those things are going to be repeated today. This being the last day of the session also sets the tone for 2024 Lok Sabha elections. BJP is all set to release its first list of candidates. So this is political activity heating up in the run up to 2024 elections. Right. Thank you, Vasudha, for joining us and bringing us those details from the ground. The Enforcement Directorate has filed a money laundering case against NCB's former zonal director and IRS officer Sameer Wankhede. A case has been filed under PMLA based on CBI's FIR on Wankhede. The ED has also summoned 3 NCB officers related to the case. Now, Wankhede, in fact, has spoken out on this and said that the case is in the Bombay High Court and that it is surprising that the ED has taken up this case. Remember, after the 2021 Cordelia Cruise drug bust case, corruption allegations cropped up against Sameer Wankhede. The NCP had set up a special inquiry team which found lapses by the Wankhede-led team. The CBI registered the corruption and extortion case against Wankhede and others based on the SET report, and the CBI's FIR alleges that Wankhede demanded a bribe of 25 crore rupees from Shah Rukh Khan to not implicate his son Aryan Khan in the case, and Wankhede allegedly took 50 lakh rupees as the first installment. My colleague Mukesh joins us with more details. Mukesh, now we're learning that Wankhede has spoken out on the ED's summons, on the ED taking up this case, and said that the case is already in the Bombay High Court and it is surprising that the ED has taken it up. Mukesh, if you can hear me. जी, आपकी आवाज आ रही है. Right. So Wankhede has now spoken out on the ED's case. He said it's surprising because the Bombay High Court is already handling the case at this moment. देखिए, बिल्कुल जो समीर वानखेड़े हैं उनकी ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मामला ऑलरेडी सब जुडिस है और मुंबई हाई कोर्ट में है, लेकिन जो ये पूरा मामला है इसको लेकर जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इस मामले में ईडी ने जो एनसीबी के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो कि उस रेड में समीर वानखेड़े के साथ थे उनसे पूछताछ की है और अगले हफ्ते भी कुछ एनसीबी के ऑफिशियल्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जो कॉर्डेलिया क्रूज़ है वहाँ पर रेड हुई थी और रेड के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को समीर वानखेड़े की टीम ने पकड़ लिया था और उसके बाद एलिगेशन ये है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसमें 50 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा डडलानी उनके जरिए समीर वानखेड़े को दिए गए। ये बात जो एनसीबी की एसआईटी है उसकी जांच में सामने आई थी। इसके बाद जो सीबीआई है उसने 11 मई 2023 को इस मामले में समीर वानखेड़े के साथ जो एनसीबी के 4 ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया था और इसमें कुछ मिडिल मैन भी शामिल थे जो एक्यूज़ बनाए गए थे। इसके बाद सीबीआई ने 29 जगहों पर रेड की थी जिसमें समीर वानखेड़े घर है, उनका दफ्तर है और जो बाकी के आरोपी हैं उनके ठिकानों पर रेड हुई थी, जहां से बड़ी संख्या में डिजिटल एविडेंस बरामद हुए थे। अब उसी मामले में जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और ईडी जो है वो एनसीबी के अधिकारियों से पूछताछ करने वाली है। Thank you, Mukesh, for joining us and bringing us those details. 4 locations, including Ballari MLA Narabharat Reddy's house, are currently under the scrutiny of the Enforcement Directorate. Raided properties include Congress MLA Narabharat Reddy's residence, his father's office, his uncle Pratap Reddy's house and his office as well. Now, the searches at these 4 locations commenced at around 6:30 a.m. this morning, with the team of officers arriving from Bengaluru to conduct the operations. Earlier, the MLA had distributed pressure cookers throughout the city of Ballari for his birthday as well, and the MLA's family is known to own a couple of granite quarries, one in Koppal district and the other in Ongole district in Andhra Pradesh.
Now, the ED officials have also conducted raids at his residence in Bengaluru and his office in Chennai, is what we're learning. I have my colleague Pratibha joining us with more details. Pratibha, take us to the latest coming out of these raids that have taken place on the Congress MLA in Bengaluru and Chennai as well. That's right. In fact, after conducting the raids in Bengaluru as well as Chennai, in fact, one of his residences is here in Bengaluru, after which around 20 ED officers along with the protection of CRPF went to Bilawal. Early this morning at around 6:30 a.m. is when they seem to have commenced the raids in around 4 properties, which also includes Nara Bharat's residence office, his father's place as well as his uncle's place. The raids have been on for quite some time. In fact, we will know further information once the raids are complete. But then the fact that Nara Bharat Reddy had distributed pressure cookers during his birthday to the entire city of Ballari did raise eyebrows at that point in time. And Nara Bharat Reddy was also in the news recently for indulging in a spat with Janardhan Reddy, who's a former BJP person who also started his own party and won from another area from the region, same region of around in and around Ballari. Nara Bharat Reddy as well as his father's home are under the ED scanner. More officers are supposedly at one of the offices of Nara Bharat Reddy in also his residence at Nehru Nagar in Ballari. These are the places where the raids are being conducted, and we are told that it will be on for quite some time, before which the information that will be seized by them as well as the materials would reveal further information on Nara Bharat Reddy. Right. Thank you, Pratibha, for joining us and bringing us those details. Now, the budget session in the Parliament has resumed. Let's take a look at what's happening in the Lok Sabha. रामराज की विशेषता क्या थी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दाहेक दैविक भौतिक तापा, रामराज कहू नहीं व्यापा। उस रामराज के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही रामराज की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का करके मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहाँ पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूँ कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर जो है, जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या की तरफ जो उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 के अंदर वहां जाकर को उस राम मंदिर को तोड़ा, और राम मंदिर जब तोड़ा, वहां पर एक उनका शेख बयाजिद नाम का एक वहां पर का लोकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। ये ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पर जिस प्रकार से सर्वे किया, 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहां पर पुनः बना, जब उस राम मंदिर की एक ईंट तोड़ी गई, उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए पिछले लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा,
500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास, वो बलिदानों का इतिहास, किसी ने हिसाब लगाया है कि उसमें राम मंदिर के उसमें वहां पर जो संघर्ष चले, जो दंगे चले, उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए। बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी जो झुकी नहीं, क्योंकि ये राम मंदिर के रूप का तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं था, ये इस देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत के ऊपर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा और 1855 से जब से कागजात हमको मिलते हैं, 1855 में वहाँ पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ, 1934 में फिर वहाँ पर दंगे हुए। मैं ज़्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। 1949 के अंदर 22 और 23 दिसंबर के मध्य भाग में वहाँ रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में रखी थी, उनके मध्य भाग में रखी गई। 1950 के अंदर वहाँ एक सिविल केस किया गया और निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, इन लोगों ने मिलकर के इसके जो है वो हमारी हमारा जो संघर्ष था वो हमारा संघर्ष चलता रहा। मैं इसके साथ साथ कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर दूसरी तरफ जन आंदोलन भी इस देश के अंदर चल रहा था। और जन आंदोलन सबसे पहले 1983 में हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पर मैं बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 1983 के अंदर जब सबसे पहले जन आंदोलन चलाने की बात हुई तो मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली के अंदर श्री गुलजारी लाल नंदा, जो इस देश के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, और श्री रज्जू भैया जी, दाऊद दयाल खन्ना जी, महेंद्र रामचंद्र दास जी, इन लोगों की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मुजफ्फरनगर के अंदर हुई। और उसके बाद 1984 में प्रथम धर्म संसद का विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया, अशोक सिंघल जी ने उसकी जो अध्यक्षता की थी। और उस जमाने के अंदर इसका अगर किसी को डिटेल पढ़ना हो तो हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता आदरणीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, वह माई कंट्री माई लाइफ, उसके अंदर इस बात का पूरा उसने डिटेल दिया है। धर्म यात्रा सितंबर। कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूँ कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को पचा पाएगी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है, लेकिन सभी लोग ये शब्द का मैं तीव्र आलोचना करता हूँ। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए, देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। Thank you. Please. Jairam, something is seriously wrong with you. Seriously wrong. Please take your seat. Take it. I am giving floor. They don't want, Mr. Tiwari, they don't want to listen to you. Your people don't want to listen to you. They don't want to listen to you. Now. Sir, thank you, sir. Please, I would appeal to you, please observe complete silence, because I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari. And don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir. I have done it more than dozen times in this house. I have yielded to the floor sentiment. ISRO. Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat, Ramesh, I will go to the extreme step now. I will go to the extreme step.
Right, Ruckus there in the Rajya Sabha, and as discussion takes place on Bharat Ratna in the Lok Sabha, discussion is continuing on the Ram Mandir. We'll continue tracking this. For now, short break. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. India is going through a massive churn in the way directors are going to, one, get appointed, two, get evaluated, and three, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value addition as they could be. So as a norm, I would say you really use the independent directors to benefit the company in its approach to creating value for all its stakeholders. India is going through multiple transitions. There is a disruption which hits India, the world, I should say, not just India, every 6 months, 9 months. Now, in that context, how do you keep your organization safe and also primed for the future? And I think that's where the role of independent directors is somebody who can independently, if I may call it so, continue to challenge the management and guide them. If a director is to be responsible for every single thing, I think it's asking too much. And there have been numerous instances. Could be aberrations where sometimes if a font on a packaging is not of the right size, there is a case on independent directors too. They don't participate in those sort of activities. So I'm sure the dust will settle down, but the independent directors should not only be protected, but feel protected. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. "10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day.
बनेगा स्वस्थ इंडिया। वन वर्ल्ड हाइजीन। जो कमांडोज इनसे अब हम मिलेंगे वो गरुड़ कमांडोज हैं। तो इनके जो कमांडोज हैं वो भी ये बहुत ही स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हम मिलने चल रहे हैं उन गरुड़ कमांडोज से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी क्या खास ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में कुछ बताएं हमें। कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। इनका ट्रेनिंग जीआरटीसी से स्टार्ट होती है और फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चारों तरफ ट्रेनिंग होती है। क्या खास रोल होता है गरुड़ कमांडोज का? गरुड़ कमांडो का कोई भी मिशन मिले, हाँ, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही होता है गरुड़ कमांडो। हमने अब जाना कुछ कि ये गरुड़ कमांडोज जो है वो क्या होते हैं, पर अभी हमें ये कुछ स्पेशल एयरबॉर्न अपनी ये ट्रिक्स और वो भी दिखाएंगे, कुछ कमाल दिखाएंगे, कारनामे, जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि क्या होगा। तो हम थोड़ी देर में वो भी विटनेस करेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग मिशन पर जा रहे हैं अपना। हमारा मिशन होगा, यहाँ से हमारा आईजेड है अराउंड 5 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लेन होंगे, वहाँ पे स्लीदर डाउन करना है हमको इंसर्शन जोन में। बेसिकली पर्पस ऑफ स्लीदरिंग इज़ कि हम कई जगह करते हैं। वॉर टाइम में दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज या ट्रूप्स को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। पीस टाइम में HADR, प्राकृतिक आपदा कोई आती है तो अगर ट्रूप्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो तो उनको इंसर्ट करने के लिए करते हैं। आज ट्रेनिंग मिशन है तो पहला अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हमारे ऊपर है। कोई हम मिशन पर नहीं जा रहे हैं आज, तो अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखिए, ध्यान में रखिए। Now, ruckus is taking place in the Rajya Sabha after Mallikarjun Kharge had in fact asked the Speaker how J.N. Chaudhary was allowed to speak. Take a look at what's happening. मैं खुद पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। Nothing. I give floor to J.N. Chaudhary. Please conclude your observations. Yes, please. Nothing. No. Pramod ji, please help me. No. सभापति जी, no. Nothing else will go on record except. Sir, I have taken a stand. Only J.N. Chaudhary will complete. After he completes. Sorry. Nothing will go on record. J.N. Chaudhary, please. सभापति जी, आज मैं I have given Pramod ji, nothing will go on record. Pramod ji, it will not go on record. सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना, उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री H.D. देवेगौड़ा, जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है।
सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूंगा सर। चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस and he undoubtedly applied it to a continuing study of agricultural problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was an intellectual, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment is that on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. Sir, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न को मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनके इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion on the white paper on Indian economy laid on the table of Rajya Sabha on 8th February 2024 and its impact on the lives of people of the country. Shri Sushil Kumar Modi, Shri Prakash Javadekar, Shri Bilawal, Shri Sushil Kumar Modi. No, sir. Okay. 1 second, Mr. Tiruchishwar. Sir, Sir, just 1 minute. I raise a point of order, sir, under Rule 33, sir. And 34 also says very clearly the allocation of time in regard to the bill or group of bills or other business as recommended by the committee shall be reported by the chairman or in his absence by the deputy chairman to the council and notified in the bulletin. Sir, we have not received anything, we have not decided anything. The white paper is very important, sir. The prerogative of the minister may take 1 or 1.5 hours, but for a party of 10 members, we have been given only 6 minutes. दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। वे जाति और जेंडर के आधार पर शोषित होती है और यौन शोषण के सामने बेबस होती है। बेबसी, चारों तरफ आज हम बेबसी देखते हैं। इस लोकसभा की चर्चा के बाद जब ये सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो युवाओं के बीच में उनको बेबसी दिखाई देगी।
आप सभी के पास आपके क्षेत्र के युवाओं आएंगे, नौकरी के गुहार लगाएंगे, रोजगार की गुहार लगाएंगे, आपके पास आएंगे इंटरव्यू के वो एप्लीकेशन लेके, आपके पास वो आएंगे टेट की परीक्षा की पार करने के वो मार्कशीट को लेके, वो आपसे कहेंगे आदरणीय सांसद महोदय मैंने परीक्षा पार कर ली, आदरणीय सांसद महोदय मैं बीए पास हूँ, आदरणीय सांसद महोदय मैं बेरोजगार हूँ। और आज ये बेरोजगारी के कारण बेबस भारतीय युवा आज नशे के रास्ते में चल पड़ा है, आज अपराध के रास्ते में चल पड़ा है। आज वो जहां भी जाता है भेदभाव महसूस करता है, आज वो बेबसी में कुछ चंद पैसे इकट्ठा करके विदेशी धरती की तरफ पलायन करता है। ये है असलियत। ये उत्तर पूर्वांचल की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो, पंजाब की हो, या गोवा की हो, या केरल की हो, या गुजरात की हो, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए सर, जब हमारा दल इतने सालों से समाज सेवा कर रहा है, हम सच्चाई से वाकिफ है। बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमसे भी गलती हुई है, ये कबूल करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब गांधी जी के राम राज्य की मार्ग पर चलती है, तो हम न्याय की मार्ग पर चलते हैं। आज भी उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के ऊपर जो राय दिया है, उसको हम स्वागत करते हैं। हम सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, जो शब्द है, इसमें जो पश्चिमी परिभाषा है सेक्युलरिज्म का, उस परिभाषा से हम अपने आप को भिन्न रखते हैं। अगर आप वो संविधान के डिबेट देखें, जब सेक्युलरिज्म शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जब संविधान में जोड़ा गया था, तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सांसदों ने यही कहा था कि हम पश्चिमी परिभाषा से हम परे रखते हैं। भारत एक धार्मिक देश है, भारत में बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। केवल एक ग्रंथ नहीं, ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि 140 करोड़ के लोगों की विभिन्न भाषा और आस्था को अखंडता के साथ, प्यार और सद्भावना के साथ बांधती है। मैं नानक के कुछ शब्द कहना चाहूँगा। नानक साहब ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से राम जग उपजय, एक नूर से सब जग उपजय, कौन भले को मंदे। तो सर, हम सभी को बांधना चाहते हैं, और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। सर, मैं इसीलिए सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूँगा कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें। आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है, उसको त्याग करें। नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है। आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो चीन से लगी हुई सीमा पर हो। आज समाज में जो बढ़ती हुई आशंका है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में, आपका अहंकार इस आशंका को देखने से आपको रोकता है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब जन्म नहीं हुआ।
इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। Banking crisis was massive and stake was too large. Policy paralysis and project delays, नीतियों की अनिश्चितता और विरोध के कारण घरेलू निवासक विदेशों में जाने लगे। The decade of UPA was a lost decade. नेतृत्व का संकट था, अर्थव्यवस्था रास्ता भटक चुका था। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और भारत एक फ्रेजाइल इकोनॉमी बन गया। उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूपीए के जो 10 साल थे, that was the most corrupt regime which this country has ever seen. मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में उनके 7 मंत्री जेल गए। डॉक्टर ए रजा, दयानिधि मारन, सुरेश कलमडी, पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान, ये 7 लोग जो यूपीए सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा। डॉक्टर ए रजा ये 15 महीने जेल रहे। सुरेश कलमडी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन थे, 10 महीने तिहाड़ जेल में रहे। अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में जो कारगिल के वार वीडियोस के लिए जो फ्लैट्स बने थे, वो सिविलियंस को देने का काम किया। दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन 2G स्कैम के अभियुक्त थे, इनको भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। श्री पीके बंसल, इनको रेल मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। इनका भतीजा विजय सिंगला 90 लाख रुपया और रिश्वत लेते हुए और पकड़ा गया। लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार, इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कोल ब्लॉक स्कैम में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। डॉक्टर वीरभद्र सिंह जो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा। शशि थरूर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, आईपीएल टीम कोची के विवाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो सभापति महोदय, ये थी यूपीए की सरकार जिनके 7 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल जाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल हो गया, एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। राफेल का मुद्दा उठा, अडानी का मुद्दा उठा, कहा कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और सभापति महोदय, ऐसी सरकार 10 साल तक सरकार में रहे और नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा। और दूसरी ओर यूपी की सरकार, सभापति महोदय, कोयला ब्लॉक आवंटन, ये कोल ब्लॉक आवंटन में इन्होंने नियम बना दिया, पहले आओ पहले पाओ। ऐसा भी कोई नियम है दुनिया में कि जो पहले आएगा उसको कोयले का कैप्टिव माइंस मिल जाएगा? सीएजी के अनुसार 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसे आवंटन को रद्द कर दिया। 47 मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, 14 में अभियुक्त को सजा हुई है। और दूसरी ओर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कोयले का ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन हो रहा है, कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आज़ादी के बाद 893
मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 2014 की तुलना में 57.8% उत्पादन में वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, कोयले के कारण जो भारत पावर डेफिशिएंट था, इंडिया इज बिकम पावर सफिशिएंट कंट्री। 2014 के बाद 1,96,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले 12 घंटे बिजली थी, अब 20 घंटे बिजली मिल रही है और अर्बन क्षेत्रों में 23.8 घंटे बिजली मिल रही है। सती महोदय, 2G स्कैम कौन नहीं जानता है? 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस है वो 1,76,000 करोड़ है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। प्लीज टेक योर सीट। प्लीज आप बोले। सती महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। लेट हिम स्पीक प्लीज। पारदर्शी तरीके से हुआ है। 5G को दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीके से रोल आउट किया गया। आज देश के 98% गांव में 5G और 4G पहुंच चुका है। और सती महोदय, जहां यूपी के जमाने में 2G स्कैम हुआ, वहां 5G के कारण 3 लाख करोड़ सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्रॉस रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। तो भाई नहीं, तो 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सती महोदय, यूपीए डिकेड वाज अ लॉस्ट डिकेड फॉर टेलीकॉम। BSNL को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। BSNL जो 2004 में $6 बिलियन की कंपनी थी, 2014 में वो लॉस मेकिंग कंपनी में बदल गई। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो BSNL को रिवाइव करने के लिए 3.22 लाख करोड़ 3 पैकेज हमारी सरकार ने देने का काम किया और आज BSNL का रिवाइवल हो चुका है। सती महोदय, कॉमनवेल्थ गेम्स 12 दिन का गेम था और जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और भारत में G20 हुआ, 1300 करोड़ खर्च हुए, पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सती महोदय, हेलीकॉप्टर खरीद में ऑगस्टा वेस्टर्न घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज घोटाला, पायलटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला। सती महोदय, कहना चाहता हूं कि धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या मंदिर जाना असम के मुख्यमंत्री के अगर शब्दों पे विश्वास रखे तो मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा में खड़े बहुत से लोग थे, उनकी श्रद्धा है। उस समय राहुल गांधी जी भी असम में थे, उनके श्रद्धा में वहां की सरकार ने बाधा क्यों दी? There discussion taking place on the Ram Mandir in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha, of course, discussion on the Bharat Ratna as well as the white paper had taken place just earlier. We'll continue tracking it for you for now shortly. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. India is going through a massive churn in the way directors are going to
1, get appointed, 2, get evaluated, and 3, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value addition as they could be. So as a norm, I would say you really use the independent directors to benefit the company in its approach to creating value for all its stakeholders. India is going through multiple transitions. There is a disruption which hits India, the world, I should say, not just India, every 6 months, 9 months. Now, in that context, how do you keep your organization safe and also primed for the future? And I think that's where the role of independent directors is somebody who can independently, if I may call it so, continue to challenge the management and guide them. If a director is to be responsible for every single thing, I think it's asking too much. And there have been numerous instances. Could be aberrations where sometimes if a font on a packaging is not of the right size, there is a case on independent directors too. They don't participate in those sort of activities. So I'm sure the dust will settle down, but the independent directors should not only be protected, but feel protected. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. जब हम अपने एयरफोर्स और अपने जवानों के पास आते हैं, सेना के लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग किस्म का जोश होता है। और आपके लिए यहाँ पर तेजपुर पे आना, कुछ यादें वापस आ रही हैं? आप यहाँ पहले आए हुए हैं? देखिए, मैंने ऊपर वाला से चाहा था कि जब मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था कि मैं वापस आऊँ यहाँ, तो मैंने यही कहा था कि जब आप लोगों ने मुझे कहा कि ये शो जय जवान जो मेरा फेवरेट शो है, कि मुझे ये it's my fortune or my honor and privilege to be on this show, तो मैंने कहा कि तेजपुर में करेंगे. So the life comes full circle, क्योंकि मैंने यूनिवर्स में भेजा था कि मैं यहाँ आऊँ और मैं यहाँ हूँ आपके साथ और इस शो के लिए, आपके शो के लिए. So beautiful. Thank you so much and it's such an honor to have you. और आज पूरा दिन हमारे सामने है, हम देखेंगे कि यहाँ क्या-क्या हो रहा है. पूरी तैयारी जो होती है लड़ाकू विमान उड़ाने के पहले, उसको भी हम आज दिन भर देखते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Social Modi speaking in the Rajya Sabha on the white paper under UPA government. Take a look. ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर
उनके समय में 6 करोड़ थे, आज नरेंद्र मोदी के समय में 24 में 90 करोड़ हैं। मंथली डेटा आपके समय में 2 मिनट और कंक्लूड 2 मिनट आपकी पार्टी के वो समय से और ये समय जाएगा फिर 1 मिनट और मंथली डेटा 0.06 GB प्रति माह आपके समय में और हमारे समय में 20 GB डेटा प्रति माह प्रति व्यक्ति आज खर्च हो रहा है। डेटा का टैरिफ 270 रुपया पर GB था आपके समय में और आज क्या है 10 रुपया पर GB। मेडिकल कॉलेज 387 था, आज 706। मेडिकल कॉलेज में सीट 51,000 थी, आज 1,08,000 मेडिकल कॉलेज में सीट है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। Their discussion on the white paper in the Rajya Sabha. While discussion continues in the Lok Sabha on the Ram Mandir, we'll continue tracking it for now. Short break. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. 10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. Banega Swasth India. One world hygiene. Welcome to the news. No time to read the morning newspaper or follow TV bulletins all day? No problem. That's where we step in. Tune into the news with NDTV, a brand new podcast that brings you the day's 5 biggest stories in just 10 minutes. Added bonus, a piece of good news you can look forward to every evening. So sit back, relax, and catch up the news with NDTV. Starting 12th of February, Monday to Friday, 6:30 every evening. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Welcome back. The extended budget session of the Parliament begins with a white paper discussion in the Rajya Sabha while Ram Mandir is being discussed in the Lok Sabha. Take a look at what H.D. Devagowda is saying in the Rajya Sabha. And your voice is so strong, you hit back all the opposition people who try to criticize. I know your capacity, madam, and I don't want to speak on the white paper because the white paper is with me. I have gone through that. Your budget proposals I wanted to speak. Unfortunately, when chairman called, I was not here. I was unable to participate. Now, the issue, which is now again in Lok Sabha, whole day is going to be discussed on Ram Temple issue. Prime Minister is going to answer in the evening, according to the information I got in Lok Sabha. Now I don't want to go beyond some of the points which has been discussed on this so-called
the Bharat Ratna issue. Sir, I was a member of the Lok Sabha from 31. I was associated with Chaudhary Charan Singh for 4 years, sir. My family stayed in his house. He used to like me so much because I am a farmer. I was unable to speak Hindi. My wife unable to speak Hindi. But he made me to stay in his house. I have got so much of relationship. What has happened, I know. When he has taken oath as the Prime Minister, he was not able to come to this house. When the agenda was fixed to meet the Lok Sabha, the previous day it was withdrawn. It was such a sorrowful day for me. I know Chaudhary Charan Singh. He is an honest to the core. Honest to the core. How people try to demolish his name, I know everything. I don't want to go beyond that. The book he has written, referred by my young gentleman, I know that. I have gone through that book, I have got that book. I can speak volumes. He was unable to come and sit in this house as Prime Minister. Late Sanjeev Reddy appointed him to conduct the election. I can speak volumes on so many issues. The progress of this country during the period of 10 years, what has been yesterday, madam, made sufficiently to meet the charges made by our other colleagues on black paper. I will leave at that stage. Sir, Swaminathan, first time I met him in Philippines in 1974. I know what is Swaminathan. And I was 10 months. I also took his service for Green Revolution. Narsim Rao Bagge, I can speak volumes. I don't want to go beyond that. Only on Ram Temple, I will conclude in 4 or 5 minutes. Sir, just because I don't want to speak unnecessarily, I may not be able to speak eloquent English, that's why I made it. Sir, I and my wife both attended the consecration of the Lord Rama temple in Ayodhya. It was a great moment of personal joy and devotion for me, like it was to millions of Indians. Ayodhya Ram was existed in our hearts and mind is an image that our ancestors and elders have permanently created. Lord Rama is a symbol of righteousness. He is a symbol of love and graciousness. He is a man who followed Dharma and Raj Dharma. He was a very accommodative and reflective. It is these values ancient in Lord Rama that drew Mahatma Gandhi to him. He was Gandhiji. It was Gandhiji who made Lord Rama a symbol of the great virtues of our nation. It is
through Lord Rama and his divine blessings that united this nation and laid the foundation for our harmonious future. It is through the moral strength that Lord Rama gave that he fought the British Empire. Right, the extended budget session is taking place today. A discussion on the Ram Mandir happened in the Lok Sabha. It's now taking place in the Rajya Sabha as well, with H.D. Deve Gowda talking in the Rajya Sabha. Remember, earlier the Rajya Sabha started with a discussion on Bharat Ratna and then on the white paper on the economy under the UPA government. Now, BJP's Sushil Modi in fact had said that a decade was lost under the UPA government, and he also hit out over the banking crisis as well. Now, there was ruckus which ensued in the Rajya Sabha during a discussion on the Bharat Ratna. Congress chief Mallikarjun Kharge had raised a question as to why Jayant Chaudhary was being allowed to speak, to which the speaker had then come down heavily on the Congress, saying that this is an insult to Chaudhary Charan Singh. Now, H.D. Deve Gowda, who is still speaking in the House, had then made an emotional speech talking about how he knew Chaudhary Charan Singh and had stayed with him at his residence at that time, and that Chaudhary Charan Singh was very fond of him since he was also from the farming community. Now, H.D. Deve Gowda also spoke about the Ram Mandir. He's still continuing his speech at this point. He said that Gandhiji had made Lord Ram a symbol of perseverance for the nation. This is, of course, the latest that we're tracking for you from both houses. Let's quickly listen in to what several of the leaders had said in both houses. भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम जिस कालखंड में जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहां जाकर के दर्शन देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं। सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग संविधान के द्वारा सिखाया, तो वही महात्मा गांधी ने इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भी हमको दिखाया। वो अंतिम लक्ष्य क्या है? उनके ही शब्दों में, राम राज्य। गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है, इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है।
The countdown to the biggest festival in the world's largest democracy has started, and everyone is preparing for the 2024 national elections. India's future is its youth, and to support that goal, NDTV is launching the hashtag NDTV18Vote campaign to make the youth aware of the need to vote. Our aim is to encourage voters aged 18 to show their strength in the 18th Lok Sabha polls. You can send us your video messages on hashtag NDTV18Vote and we will show them on air. There's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर और उनसे इस वक्त बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की। अनिल जी, आपको बस जल्दी जल्दी हाँ ना में बताना पड़ेगा। खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? नमकीन। योगा या जिम? जिम और योगा, सॉरी, बोथ। वेट्स या फ्री हैंड? वेट्स। मोस्ट कंफर्टेबल विद व्हिच एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एनी फेवरेट डायरेक्टर्स? डैनी बॉयल, शेखर कपूर, quite a few of them. हर्षवर्धन आपकी सुनते हैं या अपनी मम्मी की? किसी की नहीं सुनते। सोनम आपसे ज्यादा क्लोज है या मम्मी से? मम्मी से। घर में किसकी ज्यादा चलती है? मम्मी की। मम्मी की, आपकी मम्मी की? मम्मी मतलब सुनीता, सोनम की मम्मी और हर्ष की मम्मी और दिया की मम्मी। What's fitness for you? Way of life. What's your favorite sport? Badminton at the moment. Who's a better actor, Sonam or Harshvardhan? Both. Better actor. Both are great actors, good actors. They have to work hard and become better. What do you prefer now? आपको क्या ज़्यादा पसंद है? Long format या फिर फिल्में? Both, I think. You know, it's very because I think I've done both, and I have enjoyed doing both of them. You know, I did a long format. I did 24, and I did Night Manager, and of course, फिल्में तो मैं बचपन से कर रहा हूँ. Any all-time favorite film? Mr. India, yeah, it's my all-time favorite film. Yeah, it's a lovely film, wonderful film. I revisited it again when I did one of the ads, and there's something very, something which really it's stood the test of time. Yeah. You know, like your preferred genre for film, comedy or action? Comedy, because comedy is something which you either you can do it or you have it. Or you don't have it. Their lighting, director, music, background music that cannot help you. You have to do it yourself. You know, with action and with dramatic scenes, and with anger and violence, sex. There's a lot of things which can really help you in that. You know, जबरदस्त background music चलेगा, ऐसा लगता है बहुत जबरदस्त काम हो रहा है. Comedy में सब चलेगा नहीं. और ये खुद कर रहा हूँ. Social media पसंद है आपको? Are you on Instagram? Yes. What is Gen Z for you? Gen Z for me is, I think, Gen Z is the mind, you know. For me, anybody who has a young mind, for me is Gen Z, yeah. You would call yourself a Gen Z? Absolutely. Great. Salam UAE, the Ultimate Reality Awards is here to recognize the contribution of real estate companies and property developers in building the UAE. It's a small step to honor their journey and success stories in building the property landscape in UAE. It's indeed our pleasure to meet you at the Ultimate Realty Awards in Dubai. See you on the 17th February.
हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर और उनसे इस वक्त बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की। अनिल जी, आपको बस जल्दी जल्दी हाँ ना में बताना पड़ेगा। खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? नमकीन। योगा या जिम? जिम और योगा, सॉरी, बोथ। वेट्स या फ्री हैंड? वेट्स। मोस्ट कंफर्टेबल विद व्हिच एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित, एनी फेवरेट डायरेक्टर्स? डैनी बॉयल, शेखर कपूर, quite a few of them. हर्षवर्धन आपकी सुनते हैं या अपनी मम्मी की? किसी की नहीं सुनते। सोनम आपसे ज्यादा क्लोज है या मम्मी से? मम्मी से। घर में किसकी ज्यादा चलती है? मम्मी की। मम्मी की, आपकी मम्मी की? मम्मी मतलब सुनीता, सोनम की मम्मी और हर्ष की मम्मी और दिया की मम्मी। What's fitness for you? Way of life. What's your favorite sport? Badminton at the moment. Who's a better actor, Sonam or Harshvardhan? Both. Better actor. Both are great actors, good actors. They have to work hard and become better. What do you prefer now? आपको क्या ज़्यादा पसंद है? Long format या फिर फिल्में? Both, I think. You know, it's very because I think I've done both, and I have enjoyed doing both of them. You know, I did a long format, I did 24, and I did Night Manager, and of course, फिल्में तो मैं बचपन से कर रहा हूँ. Any all-time favorite film? Mr. India, yeah, it's my all-time favorite film. Yeah, it's a lovely film, wonderful film. I revisited it again when I did one of the ads, and there's something very, you know, something which really it's stood the test of time. Yeah. You know, like your preferred genre for film, comedy or action? Comedy, because comedy is something which you know, you can do it, or you have it, or you don't have it. Their lighting, director, music, background music, that cannot help you. You have to do it yourself. You know, with action and with dramatic scenes, and, you know, with anger and violence, sex. You know. News coming in from Ranchi at this point. Congress MP Dheeraj Sahu has appeared before the ED in connection with the money laundering case. Remember, this is the same case that former CM Hemant Soren had been arrested in. Now, Dheeraj Sahu has been questioned by the Enforcement Directorate in this particular money laundering case related to land acquirement as well. Now, this is Congress MP Dheeraj Sahu has now arrived at the ED office. He's being questioned in a money laundering case, is what we're learning at this point. The NIA conducts multiple raids in Jammu and Kashmir. Raids conducted in connection with terror funding cases. The premises of some leaders of banned Jamaat-e-Islami have been searched as well. These are the latest information that we're tracking for you at this point. The NIA has conducted multiple raids in Jammu and Kashmir, and also leaders of banned Jamaat-e-Islami are being searched as well. Premises linked to them are being searched. I have my colleague Nazir joining us with more details. Nazir, take us to the raids that are taking place in Jammu and Kashmir. What are the locations where the NIA is currently conducting searches? Well, raids have been conducted across 10 locations in Jammu and Kashmir. So from Jammu to Srinagar to Kulgam to Badgam, and some Jamaat Islam leaders, which is a banned organization under UAPA. They have also been, their premises have also been searched. Actually, over the last 6 years, NIA has consistently targeting terror funding modules. And it has broken the backbone of terror funding in Jammu and Kashmir, which has helped the security agencies a great deal to deal with separatism and militancy in Jammu and Kashmir. And almost every week, every month, NIA and other agencies, they have been consistently targeting any sort of, terror funding, module. And today, 10 locations have been raided. Search have been conducted. We're waiting for the formal statement from the NIA, what kind of recoveries have been made. But the larger thing is this is a case related to terror funding and including some of the former leaders of Jamaat Islami, which is a banned organization. They have also been searched. Their premises have also been raided. Right. Thank you, Nazir, for joining us and bringing us those details. Shifting focus to Sandesh Khali in West Bengal, it's once again in the news after locals staged a protest demanding the arrest of absconding Trinamool Congress leader Sheikh Shahjahan and his associates who had turned violent in the Sandesh Khali area of North 24 Paragnas yesterday, with a house being vandalized and poultry farms being set on fire as well. Now, authorities have imposed Section 144 in the 8 Gram Panchayat areas of Sandesh Khali, which was in the news a couple of weeks ago as well, when an ED team
alleging with central forces had gone to raid Shah Jahan Sheikh and were allegedly attacked by locals there. Now, some of the ED officials had some sustained injuries in that moment as well. Now, sources tell us that local women carrying sticks and other objects took out processions in different areas of Sandesh Khali as the protests intensified on the third day of the agitation, which was yesterday. এখন এখন যা সিচুয়েশন আছে সিচুয়েশন একদম টোটালি কন্ট্রোলে আছে দুপুরবেলা দুপুরের একটু আগে কিছু ঘটনা হয়েছিল সেটা পুলিশ গিয়েছে তদন্ত করছে আর সিচুয়েশন টোটালি কন্ট্রোলে আছে संदेश खाली असेंबली में कुछ लोगों इलाका में हमला कर रहे हैं पुलिस पर हमारे पूरा भरोसा है और पुलिस वहां काम कर रही है हमारे पास ये सूचना भी है कि उस इलाके में सीपीआईएम आगे आकर ऐसा कर रहे हैं और उनका साथ कई बीजेपी के नेताओं भी है প্রথমত অনভিপ্রেত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ললেস অবস্থা হলে যা হয় তাই হচ্ছে আর গ্রামবাসীদের পুঞ্জীবিত যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে 12-13 বছরের অত্যাচারের I have my colleague Ratnadeep joining us with more details. Ratnadeep, take us through the protests or the agitation in Sandesh Khali at this point. Well, this morning there have been, massive security arrangement which has been put in place after Section 144 has been imposed in 8 Gram Panchayat areas of Sandesh Khali. In fact, we have laid out those visuals of police actually posting posters of 144, prohibitory orders under 144 outside Sandesh Khali police station, as well as there have been increased patrol of police in the area. 8 people have been already picked up in connection to the violence which happened yesterday. In fact, police is using mics in the area to ask people to maintain calm. In fact, at this moment there is complete control over situation. That's what we are picking up from West Bengal Police Forces. We did pay out that soundbite of the additional Director General of Police Law and Order, Mr. Manoj Verma, who said that there were incidents happening yesterday. Now, for the last 3 days, there have been this protest by a group of local women, and yesterday, what had happened is that this protesters actually turned violent, and they had attacked the properties of Shivu Prasad Hazra, who is known to be a close aide of Sheikh Shah Jahan, who has been absconding ever since that attack on ED officials last month, when ED team along with central forces had gone to Sandesh Khali to raid the premises of Sheikh Shah Jahan. Ever since he has been absconding, in fact, there have been a lot of political war of words between the BJP and the ruling TMC over the attack on ED, as well as the subsequent turn of events in Sandesh Khali. But even in this present spell of violence which took place, where some properties were attacked, some arsons had taken place, and there has been a fresh war of words between Trinamool Congress and BJP. Right. Thank you, Ratnadeep, for joining us and bringing us those details. We have news coming in from Uttarakhand that after the Haldwani violence, a magisterial probe has been ordered into the incident. The probe report is set to be submitted in 15 days. Now, the probe report has been sought in 15 days is what we're learning. Remember, there was violence that occurred after a demolition drive that took place in Haldwani. I have my colleague Ravish joining us with more details. Ravish, we're learning a magisterial probe now ordered into the Haldwani violence, and a report will be submitted in 15 days. जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी और 2 महीनों के भीतर इसकी रिपोर्ट जो है वो देनी होगी। और अभी एक नई अपडेट भी आई है कि ये अब्दुल मलिक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये वही शख्स हैं जिनकी जमीन पर ये जो मदरसा था वो था,
तो इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ में तकरीबन आधा दर्जन और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कई सारी जो उत्तराखंड की पुलिस की टीमें हैं वो लगी हुई हैं, लगातार जो है वो छापेमारी कर रही हैं अलग अलग जगहों पर। और उत्तराखंड पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि वीडियो और जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जिन लोगों ने पथराव किया है या फिर पुलिस पर हमला किया है उनकी धीरे धीरे पहचान हो रही है और जैसे जैसे पहचान हो रही है वैसे वैसे उनकी जो है वो गिरफ्तारी की जाएगी और उनके ऊपर में एनएसए लगाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है, उसमें से 4 शव की पहचान हो चुकी है। 1 शव को अभी तक मोर्चरी के अंदर रखा गया है, अभी उस शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और अभी तक इस शव के परिजनों को पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही है कि आखिर इनका एड्रेस क्या था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया उस वक्त ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का काम कर रहे थे और फिर इनको जो है वो गोली लगी और इनकी मौत हो गई। अभी इस शव की भी पहचान पुलिस के जरिए की जा रही है। बनफूलपुरा इलाके समेत बनफूलपुरा का जो जगह है वहां पर तो कर्फ्यू लगा है, लेकिन बाकी शहर के इलाकों में कई सारे जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। धीरे धीरे अब जो है वो हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन बनफूलपुरा इलाके में अभी तक पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो उत्तराखंड की पुलिस है वो भारी तादाद में वहां पर तैनात की गई है ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। लेकिन पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, हालात धीरे धीरे हल्द्वानी के सामान्य हो रहे हैं। Right. Thank you for joining us, Ravish, and bringing us those details. We'll continue tracking these stories for you. For now, a short break. Welcome to the news. No time to read the morning newspaper or follow TV bulletins all day? No problem. That's where we step in. Tune into the news with NDTV, a brand new podcast that brings you the day's 5 biggest stories in just 10 minutes. Added bonus, a piece of good news you can look forward to every evening. So sit back, relax and catch up the news with NDTV. Starting 12th of February, Monday to Friday, 6:30 every evening. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. India is going through a massive churn in the way directors are. गोवा में अभी रेवेन्यू सरप्लस बजट जो है वो अनाउंस हुआ है, इंडिया एनर्जी वीक होस्ट हुआ है और गोवा भारत की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।
और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेवेन्यू सरप्लस जो है बजट अनाउंस हुआ है, इसमें कोई नए टैक्सेस जो है नहीं अनाउंस हुए, तो व्यूअर्स के लिए आप क्या हाइलाइट्स जो हैं शेयर करना चाहेंगे इस बजट से? सबसे पहले इस बजट में जो खास करके हमने इस बजट के अंतर्गत पेश करते हुए रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने लोगों के सामने रखा है। कौन सा भी टैक्सेस इसके ऊपर हायर अप नहीं किया है। दिस इज़ एन एडिशनली टू डेट इट इज़ एन जेंडर बजट हमने इस बार सिलेक्ट किया है। माननीय मोदी जी हर वक्त वुमेन लेड गवर्नेंस की बात करते हैं, इसलिए हमने जेंडर बजट इस बार दिया है। अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द 14 डिपार्टमेंट्स में 30% ऑफ द बजट वी आर स्पेंडिंग ऑन द वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन के बाकी सभी प्रोग्राम्स के लिए हम स्पेंड कर रहे हैं। और मिड टर्म फिस्कल प्लान ये भी बजट में हमने हाईलाइट किया है। खास करके इस बजट में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्री, टूरिज़्म, आईटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा भर रहेगा। और माननीय मोदी जी के अंतर्गत नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब कल्याण और किसान शक्ति, इस चारों कंपोनेंट के ऊपर आधारित ये बजट हमने लोगों के सामने रखा है। डेफिनेटली ये बजट जो विकसित भारत 2047 की, उसी तरह से विकसित गोवा 2047 के लिए नींव रखने वाला बजट रहेगा। जी बिल्कुल। और सर कंग्रेचुलेशंस, इंडिया एनर्जी वीक जो है गोवा ने होस्ट किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि गोवा जो है वो परफेक्ट डेस्टिनेशन है इसके लिए। और ये जो है, आपको क्या लगता है कि गोवा जो है अब इस चेंज को, इस परिवर्तन को कैसे लीड कर सकते हैं और बाकी स्टेट्स के लिए कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए? जी हाँ, कि इंडिया एनर्जी वीक जो 2024 हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 6 तारीख को इनॉग्रेट किया। 4 दिन के लिए प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंडिया एनर्जी वीक। खुद मैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में यहाँ पे था। जिस तरह से कि कार्बन इमिशन ज़ीरो की बात चल रही है, 2070 तक कार्बन इमिशन जीरो करने की बात माननीय मोदी जी ने कही है, उसी अंतर्गत हम जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो काम यानी बाकी पूरे देश भर में कर रहा है, उससे गोवा थोड़ा आगे ही है 100%। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल ईवी चार्जिंग व्हीकल्स हो, इस सभी सेक्टर में वी आर गिविंग द फॉर द ईवी चार्जिंग सेक्टर में 25% ऑफ द सब्सिडी और बाकी सोलर से लेके विंड एनर्जी तक सभी के लिए सब्सिडीज हमने अनाउंस कर दी है। और हमने सेपरेटली द गैडा विच इज़ द कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोवा विच वर्किंग फॉर द सोलर एनर्जी पर्पस, फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी पर्पस। गोवा अब और क्या कदम लेगा टूरिज्म को और भी बूस्ट करने के लिए और एनहांस करने के लिए? अब एक तरह से काफ़ी लोगों का ये मानना है कि देखिए डायरेक्ट टक्कर आ गई है लक्षद्वीप से। गोवा हमेशा के लिए सन, सैंड और सी इसके लिए जाना जाता था। हम इस सन, सैंड और सी के साथ स्पिरिचुअल टूरिज़्म ऐड कर रहे हैं, वेलनेस टूरिज़्म ऐड कर रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए हो, चाहे वो वेलनेस टूरिज़्म के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द डबल इंजन सरकार हम रेडी कर चुके हैं, रेडी कर रहे हैं। और इवन दो we are asking for the private players to invest in the state on the PPP basis। इसमें बहुत सारे लोग, चाहे वो वेलनेस में हो या स्पिरिचुअल टूरिज़्म में, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गोवा राज्य हमेशा के लिए टूरिज़्म, देश का टूरिज़्म कैपिटल स्टेट रहेगी। जी बिल्कुल। और अब हमने रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा है कि देखिए रीजेनरेटिव टूरिज्म पर काफ़ी फोकस रहेगा आने वाले समय में। तो हमारे दर्शकों के लिए आप इसको डीकोड करेंगे कि रीजेनरेटिव टूरिज्म क्या होता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? स्पिरिचुअल और वेलनेस टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ एन रीजेनरेटिव टूरिज़्म। इसीलिए बोल रहे हैं कि फिर से एक बार हम जब स्पिरिचुअलिटी हो या चाहे वो वेलनेस टूरिज़्म हो, तो लोगों को यहाँ आने के बाद यानी वेलनेस के टूरिज़्म के थ्रू या स्पिरिचुअल के टूरिज़्म के थ्रू एक अच्छा फील हो जाए, पॉजिटिव फील आ जाए, उनमें बदल दिखलाए, वही एक रीजेनरेटिव की बात हम करते हैं।
जी बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक की फोकस एरिया रहा है गोवा में, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से आपकी सरकार आई है। तो ये जो है काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं अब आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फोकस रहेगा। लास्ट 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार के कार्य में मोर देन 30,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने स्पेंड किया है। चाहे जितने सारे रोड्स, ब्रिजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टूरिज्म प्रोजेक्ट जो दिखते हैं इसी डबल इंजन के कार्यकाल में हमने बनाए हैं। तो आगे जो हम टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आईटी सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो थ्रू द भारत नेट द कनेक्टिविटी हम हर घर फाइबर की बात कर रहे हैं और इंटरलैंड टूरिज्म की जो बात करें तो इंटरलैंड टूरिज्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग सन सैंड सी से आगे इंटरलैंड जाना भी प्रीफर करेंगे। तो आगे गोवा के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरलैंड टूरिज्म का ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी क्रिएट करना सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है, देखिए कि सरकार ने वादा किया था कि माइनिंग जो है गोवा में फिर से शुरू होगी, लेकिन इसके दो इश्यूज हैं, एक एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं और एक ये वादे का कंसर्न है। तो इस पर आपका क्या विचार है? पहली जो बात है कि माइनिंग स्टार्ट करना, जी हाँ 100% हम माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 9 ब्लॉक ऑक्शन कर चुके हैं। 5 ब्लॉक जो माइनिंग लीज होल्डर्स उन्होंने लिया है और हमने हमेशा के लिए बात की है कि सस्टेनेबल माइनिंग हम करने वाले हैं। जो सस्टेनेबल की माइनिंग है, माइनिंग की बात है, विद इन दैट पीरियड दैट मच लीज पीरियड में उतना ही ऑक्शन करना विच कॉल्ड द सस्टेनेबल माइनिंग विच इज़ विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कुछ हानि न पहुँचते हुए सस्टेनेबल माइनिंग के ऊपर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, सो सस्टेनेबल माइनिंग जो है अब फोकस रहेगा। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी ये सवाल है कि देखिए अब 2 मिनिस्टर जो हैं उन्हें हटाया गया है या रिमूव हुए हैं एक तरह से, तो ये लोकसभा पोल्स पर इसका क्या असर रहेगा? किसी को हटाया नहीं है, सिर्फ हमारे एक मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है। इट इज़ एन पार्टी हैज़ रिक्वेस्टेड हिम, so because of the to accommodate some senior MLAs into the cabinet, so on the request of the party he has resigned और नए एक न्यू सीनियर MLA को हमने मिनिस्टर किया है। बाकी और कौन से भी रीशफल नहीं हुआ है। 100% इसका असर आने वाले इलेक्शन पे कुछ नहीं होगा। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गोवा के दोनों सीट हम बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। जी, और अपस्किलिंग एजुकेशन जो है ये फोकस एरियाज काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इस पर भी काफ़ी फोकस है आने वाले समय में। तो क्या कोई कॉन्क्रीट नंबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने देखा और काफ़ी सारे जो यूथ हैं गोवा में वो इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमेशा स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की बात हम करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास करके हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी गोवा में इनवाइट किया है। आज तक 5 private university proposal had given already the 2 universities have started their work. Beside this, there is a National Forensic Science University, the International School of Law, NIT का बहुत बड़ा कैंपस, IIT का बहुत बड़ा कैंपस। इसके सिवाय द गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस पहले से गोवा में हैं और फिर भी जो न्यू कैंपसेस गोवा में आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं और हमेशा के लिए द गोवा इज़ डेवलपिंग एज अ एजुकेशन हब। तो आगे भी जो कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, और जो टूरिस्ट के कंसर्न्स हैं और गोवंस के जो कंसर्न्स हैं कल्चर और हेरिटेज को लेकर, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं सर आने वाले समय में? जो यहाँ का टूरिज़्म जो बढ़ते आया है, विट इज़ ऑलवेज द पीपल आर प्रीफरिंग फॉर द ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा, और यहाँ का कल्चर मेंटेन करते हुए टूरिज़्म बढ़ना चाहिए, यही सोच सरकार की है। और हमेशा के लिए यहाँ की कल्चर हेरिटेज हमने रखी है, वही मेंटेन रखने के लिए सरकार का प्रयास रहेगा। जी, और जो 28% GST है कैसीनोज पर, ये भी एक काफ़ी इशू रहा है, एक फ्रिक्शन पॉइंट रहा है एक तरह से, तो इस पर आपके क्या विचार है?
जी नहीं, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने 28% इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा तो हमने तुरंत उसका बिल पास कर दिया है। यानी पहले ऑर्डिनेंस निकाला था, अभी बिल पास कर दिया। दैट विल गिव द रेवेन्यू फॉर द स्टेट। राइट, ये जो एब्सेंस है ऑफ ओला उबर गोवा में और एक स्ट्रॉन्ग टैक्सी यूनियन जो है, ये जो है ये भी एक की फ्रिक्शन पॉइंट है एक तरह से। इसका सोल्यूशन, इसका हल जो है हम कैसे निकाल सकते हैं? दो चीज़ है, हमने गोवा माइल्स बोल के नया ऐप गोवा में लॉन्च किया है, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और इवन दो द मीटर टैक्सी जो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो अभी गोवा के जो टैक्सी यूनियन और इनको पता चला है दे वांट टू कम ऑन द ऐप बेस्ड टैक्सी, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% लोग ऐप बेस्ड टैक्सी पे आए हैं और कुछ दिनों में ऑल द पीपल विल कम ऑन द ऐप बेस्ड टैक्सी। दिस इशू विल रिजॉल्व सेपरेटली, यानी ऑल विल कम ऑन द ऐप बेस्ड, देन देयर इज कोई इशू नहीं रहेगा। कोई इशू नहीं रहेगा। काफ़ी सारे टूरिस्ट और जो गोवंस हैं वो ऑफ कोर्स ये जवाब बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर है और जो इन्वेस्टमेंट हब जो है गोवा को बनाने का जो एम है सर, इस पे जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वर्क प्लेस ऑन द बीच का भी एक कॉन्सेप्ट जो है शायद आएगा आने वाले समय में, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये कैसे आएगा, कब तक इम्प्लीमेंट होगा, क्या ख्याल है आप? गोवा में स्टार्टअप पॉलिसी हम हमारे आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं और हमेशा के लिए आईटी पॉलिसी, द स्टार्टअप पॉलिसी, इनके लिए बहुत अच्छा प्रतिशत गोवा के जो आईटी यूथ है, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में जितने यूथ हैं वो उसके बेनिफिट्स भी लेते हैं। नो डाउट इट इज़ एन वर्क फ्रॉम गोवा, ये जो बात हमने की है इसके लिए वर्क प्लेस एट द बीच साइड हम पहले गवर्नमेंट की तरफ से बना रहे हैं। कुछ एक आधे साल में ये बन जाएगा, then the so many people will come to enjoy the Goa also and to work from Goa, work from beaches। ये कंसेप्ट हम एस्टाब्लिश करना चाहते हैं। सरकार कम से कम समय में ये वर्क फ्रॉम बीचेस या वर्क फ्रॉम गोवा ये कंसेप्ट एस्टाब्लिश करेगी। जी बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस विद प्लेजर जैसे कहा जाता है, वो भी अब जल्द इम्प्लीमेंट होगा गोवा में। टूरिज्म तो है ही है। तो ये जो है टॉप 3 फोकस एरियाज आने वाले समय में, अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 3 फोकस एरियाज जो है वो क्या रहेंगे? आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट इन द आईटी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट इन द टूरिज्म सेक्टर, इसके लिए हमारा फोकस रहेगा। और इवन दो फॉर दैट पर्पज इट इज़ एन ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, यही बात हम आगे लेके जा रहे हैं। रिसेंटली हमने इन्वेस्ट समिट जो लिया और उसी के साथ साथ हमने वी आर इनवाइटिंग फॉर द टूरिज्म, आईटी एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज सो मेनी पीपल, इवन दो इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम लोगों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस उनके लिए जो कुछ मदद चाहिए विद द सिंगल विंडो क्लियरेंस वी आर रेडी टू गिव। जी बिल्कुल। और आखिर में एक जो बात काफ़ी ट्रेंड हो रही है वो ये है कि गोभी मंचूरियन का जो इशू है वो एक तरह से स्टर हो गया है, क्योंकि काउंसिल ने वेंडर्स को जो है बैन कर दिया है इस डिश से, और इस डिश पर जो है एक तरह से एक बैन लगा दिया है। तो ये जो पूरा इशू एरप्ट हुआ है और जो रिसेंटली ट्रेंड हो रहा है, इस पर आपका क्या ख्याल है? दिस इज नॉट अ स्टेट वाइज बैन एज सच। किसी टेम्पल एरिया में जब जत्रा चल रही थी तो उन्होंने खुद जो विद इन द टेम्पल प्रीमाइसिस में उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि वो क्लीनिनेस हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बंद किया था। ऐसा कुछ स्टेट वाइड बंद किया ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जहाँ पे रेस्टोरेंट 5 स्टार यहाँ पे सब कुछ वहीं पे चलता है, दैट इज दे आर मेंटेनिंग देयर हाइजीन एंड ऑल दिस थिंग। दैट इज नॉट अ स्टेट वाइड बैन। इट इज नॉट अ स्टेट वाइड बैन, बट जो लोग घर बैठे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप गोभी मंचूरियन खाते हैं सर, तो उनको आप क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, यानी एवरीवन कैन एंजॉय द गोभी मंचूरियन। जहाँ पे हाइजीनिक फूड मिलता है हमेशा के लिए हाइजीनिक फूड खाए, इसके लिए कोई किसी को बैन नहीं करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सारे ही विषय में जो है बात करने के लिए, चाहे वो बजट हो, टूरिज्म हो या फिर इंडिया एनर्जी वीक हो, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो। तो ये जो है सारे ही टॉपिक्स जो देखिए हमने एड्रेस कर लिए हैं। गोवा का फ्यूचर जो है और जो नियर टर्म प्लान्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ गोवा में साक्षी बजाज, NDTV के लिए। The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space
to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. "10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. Banega Swasth India, one world hygiene. यहाँ पे जो कमांडोज इनसे अब हम मिलेंगे वो गरुड़ कमांडोज हैं। तो इनके जो कमांडोज हैं वो भी ये बहुत ही स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हम मिलने चल रहे हैं उन गरुड़ कमांडोज से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी क्या खास ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में कुछ बताएं हमें। कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। इनका ट्रेनिंग जीआरटीसी से स्टार्ट होती है और फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चारों तरफ ट्रेनिंग होती है। क्या खास रोल होता है गरुड़ कमांडोज का? गरुड़ कमांडो का कोई भी मिशन मिले, हाँ, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही होता है गरुड़ कमांडो। हमने अब जाना कुछ कि ये गरुड़ कमांडोज जो हैं वो क्या होते हैं, पर अभी हमें ये कुछ स्पेशल एयरबॉर्न अपनी ये ट्रिक्स और वो भी दिखाएंगे, कुछ कमाल दिखाएंगे, कारनामे, जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि क्या होगा। तो हम थोड़ी देर में वो भी विटनेस करेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग मिशन पर जा रहे हैं अपना। हमारा मिशन होगा, यहाँ से हमारा आईजेड है अराउंड 5 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लेन होंगे, वहाँ पे स्लीदर डाउन करना है हमको इंसर्शन जोन में। बेसिकली पर्पस ऑफ स्लीदरिंग इज़ कि हम कई जगह करते हैं। वॉर टाइम में दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज या ट्रूप्स को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। पीस टाइम में HADR, प्राकृतिक आपदा कोई आती है तो अगर ट्रूप्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो तो उनको इंसर्ट करने के लिए करते हैं। आज ट्रेनिंग मिशन है तो पहला अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हमारे ऊपर है। कोई हम मिशन पे नहीं जा रहे हैं आज, तो अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे, ध्यान में रखिए। जो कमांडोज गए थे, गरुड़ कमांडोज, वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे और हम देखेंगे अब वो वहाँ से उतरते कैसे हैं। स्लिदरिंग एक्टिविटी है जो अभी हम देखेंगे। तो दे स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज, and they're the first responders. First responders in every situation, everywhere. They are the specially trained forces. स्पेशल प्लेयर होते हैं इनके और खास ट्रेनिंग। A lot is dependent on them. A lot. Most. It's they're the protectors. Yeah, and quick response. Quick response, The Realme 12 Pro Plus 5G was recently launched in India, and the company has touted the handset's periscope portrait camera capabilities. The phone is equipped with the Sony IMX890 primary sensor and an OmniVision OV64B sensor for portrait shots.
Technical Guruji takes a closer look at the Realme 12 Pro Plus on this week's episode of Gadgets 360 with TG. Story of this week, the top story, I have a smartphone. And speaking of smartphones, आपके दिमाग में आएगा, I mean smartphones are typically like all the same. आपको पता है what exactly is the basic set of things, but this one is a bit different because what I have is this. ये है Realme का latest Realme 12 Pro Plus. Designed uniquely, feels like a luxury watch. ये जो पूरा इसका कैमरा आइलैंड है, kind of specs it packs, it is a really powerful smartphone, especially in terms of the camera and I mean the design is very unique. तो एक बार आप देखिए और experience कीजिए that how exactly is this Realme 12 Pro Plus as a package और क्या-क्या चीजें इसमें Realme ने पैक की हैं and making this one of the best camera smartphones in this price segment. Realme 12 Pro Plus 5G एक काफी कैमरा फोकस डिवाइस है. ये इसके बैक पे प्रेजेंट लार्ज सर्कुलर कैमरा हाउसिंग को देख के ही एविडेंट हो जाता है. एंड Realme ने बैक के डिजाइन में एक लग्जरी वॉच के सर्कुलर हाउसिंग के डिजाइन क्यूज भी डाले हैं. इसमें Realme के डिजाइन स्टूडियो ने इंटरनेशनल लग्जरी वॉच डिजाइनर ओलिवियर सावियो की हेल्प ली है. द बैक इज वीगन लेदर प्लस दिस डायमंड पैटर्न इन द बैक इज प्लेस्ड टू रिमाइंड यूजर्स ऑफ द टेक्सचर ऑफ लग्जरी वॉच स्ट्रैप्स. फ्लैश को टॉप सेंटर में रखने की वजह से एक सिमेट्री भी देखने को मिलती है. While the Navigator Beige variant may not stand out per se, Submarine Blue and Explorer Red do pull eyes. इस ट्रिपल कैमरा सेटअप में दो हाइलाइट्स हैं. One is the 50 megapixel Sony IMX890 OIS camera and the second is a 64 megapixel periscope portrait camera courtesy an OmniVision OV64B sensor. इस वजह से आप बैक पे 120x सुपर जूम की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं. 3x ऑप्टिकल जूम है. These cameras take good photos and थोड़ी अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के बाद you get good portrait photos as well. इसके अलावा फोन में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है which helps in other different situations जहां पर आपको ज्यादा सब्जेक्ट को फ्रेम में लाना होता है. The camera also offers some cinema-inspired tunings and filters जिनको Realme ने Claudio Miranda के साथ co-develop किया है. 32 megapixels का सेल्फी कैमरा एक छोटे से पंच होल में छुपा हुआ है, surrounded by a 6.7-inch Pro XDR display. Refresh rate 120 Hz है, however the local peak brightness is 950 nits. Running this device is a Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset. ये एक 4 nanometer processor based chipset है, has been power efficient, good at understandable multitasking and आपको 8GB या 12GB RAM के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. These will also get you 128GB या फिर 256GB of internal storage के ऑप्शंस. Other features जो इस फोन की ease of everyday usage में हेल्प करते हैं are the 5000 mAh बैटरी, the 67 watt super whoop चार्ज की compatibility जिसका चार्जर फोन के बॉक्स में ही आपको मिल जाता है and out of the box Realme UI 5.0 का OS. ये काफी कस्टमाइजेबल है but could do with less pre-installed apps. फोन 5G plus 5G dual mode सपोर्ट करता है via 2 nano SIM cards and on Realme's own India website बेस वेरिएंट आपको 29999 का मिलेगा एंड टॉप वेरिएंट आपको 33999 का मिलेगा. But ChatGPT, Copilot and Google's Gemini have made our lives a lot easier by helping us get detailed answers to questions without having to browse through multiple search results. However, generative AI tools can also be used by students to complete their homework or submit assignments without any effort. Technical Guruji explains how teachers or employers can use AI detection services that are available online to check if content has been generated using artificial intelligence tools. Take a look. So friends, in today's fast-growing field of tech, हम शायद कहीं ना कहीं हमारी creativity को थोड़ा सा sideline कर देते हैं and we just do a quick Google to arrange for all our assignments या जो भी हमको कभी submit करना था, you know, GPTs and all, and it's getting very popular. Now this tip is for all the teachers. मैं आपकी मदद करने वाला हूँ because आप भी देखते होंगे at times students just submit all their assignments, all the homeworks done by ChatGPT. अब आपको अगर पता लगाना है that if it is created by using AI, there are different websites and tools available for you. There are tools like GPT-0, it's like Quillbot, या अगर आप Google करेंगे तो आपको और भी ऐसे काफी resources मिल जाएंगे जहां पे if you just paste that assignment जो आपको मिला है किसी स्टूडेंट ने अगर सबमिट किया है बड़े ही स्टाइल से, with just one click, these tools can tell you that if it is generated using AI or not. Now some of them are free, some of them are paid, but then there are many freemium वाले कुछ options हैं जहाँ पे आप एक trial इनका ले सकते हैं and it clearly shows that no matter the kind of AI we have, no matter how advanced the ChatGPT gets,
जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत यूनिक बनाती है, और उसको पता लगा पाना कि ये ह्यूमन जनरेटेड है या एआई जनरेटेड, इट्स पॉसिबल एंड देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स गिविंग यू राइट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज असाइनमेंट्स. सो टीचर्स, आपके लिए मैंने आपको एक टिप दे दिया है, एंड फॉर स्टूडेंट्स, you know what to do now. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. India is going through a massive churn in the way directors are going to, one, get appointed, two, get evaluated, and three, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value addition as they could be. So as a norm, I would say you really use the independent directors to benefit the company in its approach to creating value for all its stakeholders. India is going through multiple transitions. There is a disruption which hits India, the world, I should say, not just India, every 6 months, 9 months. Now, in that context, how do you keep your organization safe and also primed for the future? And I think that's where the role of independent directors is somebody who can independently, if I may call it so, continue to challenge the management and guide them. If a director is to be responsible for every single thing, I think it's asking too much. And there have been numerous instances. Could be aberrations where sometimes if a font on a packaging is not of the right size, there is a case on independent directors too. They don't participate in those sort of activities. So I think, I'm sure the dust will settle down, but the independent directors should not only be protected but feel protected. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Final day of the Parliament commenced with a fiery face-off over Bharat Ratna. Discussions on the Ram Mandir and white paper on UPA government also took place. Assam mulls UCC implementation की Assam cabinet meeting this evening. 5 arrested over Hathway violence. Curfew lifted from parts of the town. Magisterial probe ordered into the incident. Report sought in 15 days.
NIA conducts raids in Jammu and Kashmir, raids in connection with terror funding. Pakistan election results remain a cliffhanger, no clear winner, and parties scramble for allies. Reports tell us Nawaz and Bilawal are set to join hands. BCCI announces squad for final 3 matches of India versus England Test series. Virat Kohli to miss the remaining matches. The Lok Sabha began with a discussion on the Ram Mandir. BJP's Satyapal Singh spoke about the historic nature of the Pran Pratishtha ceremony at the Ram Mandir as well, while the Congress's Gaurav Gogoi emphasized secularism but said that the party distances itself from the Western meaning and adopts secularism as equality of all religions and not just one scripture. Now, H.D. Devagowda also spoke about the Ram Mandir. He said Gandhiji made Lord Ram a symbol of perseverance for the nation. Listen in to what Satyapal Singh and Gaurav Gogoi had to say. जो सदन भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम जिस कालखंड में जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहां जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है. Now, as the Rajya Sabha took on the white paper on the economy under the UPA government, while BJP's Sushil Modi said a decade was lost under the UPA government and hit out over the banking crisis, the Congress urged this was the BJP's tactic to diverge from real issues. Listen in to what the leaders had to say. Sir, my simple question is only that, sir, when we are giving new guarantee, we have to think about the guarantee which are given by your Prime Minister to the country. That is what, sir, 2 crore jobs per year. The guarantee given by Honorable Prime Minister. 10 years over, how many jobs you are given? When you are talking about the guarantees, in future, at least do a post-mortem of what happened to which guarantee. जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, पब्लिक फाइनेंस बुरी अवस्था में था, बैंकिंग क्राइसिस वाज मैसिव एंड स्टेक वाज टू लार्ज, पॉलिसी पैरालिसिस एंड प्रोजेक्ट डिलेज, नीतियों की अनिश्चितता और विरोध के कारण घरेलू निवासक विदेशों में जाने लगे. The decade of UPA was a lost decade. Now, there was ruckus in the Rajya Sabha during a discussion on the Bharat Ratna. Congress chief Mallikarjun Kharge raised a question as to why J.N. Chaudhary was being allowed to speak, to which the speaker had come down heavily on the Congress, saying this is an insult to Chaudhary Charan Singh, and that BJP's Piyush Goyal in fact also said that this was a moment to rejoice and not to politicize the issue. While H.D. Devagowda then made an emotional speech talking about how he knew Chaudhary Charan Singh and had stayed with him at his residence. Listen in to what the leader said. सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है. हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ. तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए. ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं.
My colleague Vasudha joins us with more details. Vasudha, take us through the Parliament session today. It of course started with a fiery debate on the Bharat Ratna, and then there were discussions on the White Paper as well as the Ram Mandir as well. Of course, Aarti, the 17th Lok Sabha is all set to end today. It was extended by 1 day. In the Lok Sabha, the discussion on Ram Temple has already begun. It is a short-term discussion. In the Rajya Sabha, of course, there is a debate that is going on the state of economy during the UPA time, and a lot of drama has taken place in both houses. In the Lok Sabha, of course, lead MPs like Satyapal Singh and other speakers from BJP insisted on, talking about Ram being the ethos and soul of the country, and the Ram Temple representing the integrity of the country, and also something that the country has been waiting for years. And then you saw speakers like Gaurav Gogoi actually talking about the need to talk about real issues as opposed to creating alleged divisions. In the Rajya Sabha, of course, we heard people like Sushil Modi and others talk about how Congress allegedly had kept the country back, and he also talked about the various kind of scams that were unearthed during the Congress regime. Of course, that was opposed by the Congress leaders, clearly saying that this is one way of politicking by the BJP in the run-up to 2024 elections. But there was a lot of drama when the Parliament session began, with Jayant Chaudhary, standing up to thank the government for the honour that was bestowed on Chaudhary Charan Singh, his grandfather, and also the founder of RLD, a Jat farmer Neta, son of the soil. And he said that farmers are extremely happy. When he was made the Prime Minister of the country, farmers had distributed sweets. The same thing happened yesterday. But while he was speaking, Mallikarjun Kharge stopped him, and he said, and he asked as to what section he is being allowed to speak. This led to a lot of, sparring between the Treasury benches and the opposition, with Purushottam Rupala, Minister, and also Piyush Goyal actually opposing the opposition's rejection of Jayant Chaudhary's remarks. And they said that, this is an insult to the farming community, and issues like Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh should not be politicized. So just 1 day after Bharat Ratna was announced for Chaudhary Charan Singh, and RLD, made a move towards the BJP. A lot of politics today, political play was seen in the Parliament. Of course, there's more to see as the day advances and as the Ram Mandir discussion picks up now. Right. Thank you, Vasudha, for bringing us those details. Shifting focus now, after Uttarakhand, Assam Cabinet now mulls bringing in the Uniform Civil Code. A key Cabinet meeting is expected to take place this evening. Sources tell us that the Cabinet will discuss the state budget, anti-polygamy law, and review the Uttarakhand UCC bill as well. Sources also say that the Cabinet is looking to give its nod to the drafting of the UCC bill for the state as well as for the anti-polygamy bill. The Assam CM, remember, had earlier spoken in several instances about bringing in a bill against polygamy and also about implementing the UCC. Listen in to what Assam Minister Ranjit Das and AIUDF MLA had to say about the matter. Our Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ji already announced UCC definitely come in Assam, and regarding this some rule preparation is going on. Most probably within a short days this will come in our cabinet, and after passing from the cabinet it will we pass from the assembly. Opposing UCC because it will affect our diversity, so we can't support UCC. There is so many classes, so many religions, so many tribes, communities in our country. I think it is about 550 tribes and sub-tribes. So UCC cannot impose a country like India. Right, I have my colleague Ratnadeep joining us with more details. Ratnadeep, now the big debate on UCC has started in Assam as well. We just heard the cabinet minister say that they are genuinely thinking of drafting the bill, but of course AIUDF bringing in the fact of tribals as well, and how the UCC cannot be a blanket law over them. That's right. In fact, in Assam, what we are picking up from our sources, that today there is a key cabinet meeting which is basically called to discuss the state budget, which is going to be tabled in the State Legislative Assembly on coming Monday, that is February 12th. But apart from that, there are some
few more key agendas that also includes the approval of the state cabinet to the drafted bill for anti-polygamy law in Assam. Remember, Assam has already a bill is ready which needs to be tabled in the assembly, which will ban polygamy in Assam. Now remember, in the last press conference of the chief minister categorically said that the state government is going to review the UCC which has been passed in Uttarakhand assembly, and then take a step forward in terms of how they can bring in the legislation in Assam. Now what we are picking up from our sources is that the cabinet today is going to decide about basically the features in the Uttarakhand assembly that might be brought in Assam, as well as what else Assam can do, maybe chart out a roadmap in terms of when Assam can bring in this legislation. And we'll have to wait and watch to see if the Assam government actually goes on to make an effort to bring in the UCC legislation for Assam, the bill, in the ongoing session of the State Legislative Assembly, given the fact that this assembly is started from February 5th and is a 14-day session. And therefore, this is a key meeting which is taking place this evening, and later in the evening we'll get to know what will be the stand of the Assam cabinet on this. But a crucial meeting in Assam seems to be ready in terms of taking a forward step in bringing in the UCC legislation in the state. Right. Thank you, Ratnadeep, for bringing us those details on this development. A magisterial probe has been ordered into the Haldwani violence. A report has been sought in 15 days. 5 people have been arrested so far, and a case has been filed over 5,000 unidentified miscreants. Remember, arson and violence followed a demolition drive in the Uttarakhand town, leading to the death of 5 people, after which internet services were shut down as well. The curfew has now been lifted in parts of Haldwani. Right. Remember, Haldwani had experienced violence. As of now, the situation seems to be peaceful, and a magisterial probe has been initiated into the violence there. A report has been sought in 15 days. Remember, the CM Dhami had also said that action will be taken on the rioters and the miscreants. A case has been filed on over 5,000 people, unidentified miscreants who were part of the ruckus that took place on that particular day. Now, what exactly happened was the district administration had undertaken a demolition drive of illegal structures, post which the locals there had then started attacking, or miscreants there had started attacking the police officers. 5 people had lost their lives in the violence that took place in Haldwani. There you can see visuals of the Chief Minister meeting with the security officials who were injured there as well. About 100 or so security officials had been injured in that particular incident. The district magistrate post that particular incident had also said that there was no sort of instigating that took place from the side of the security officials, but that the mob had then attacked them. I have my colleague Ravish joining us with more details. Ravish, we're learning at this point that a magistrate has ordered a probe into the Haldwani violence, and a report will be handed over in 15 days. जी बिल्कुल, हल्द्वानी के में जो हिंसा हुई है बनफूलपुरा में, उसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन के भीतर जो कुमाऊं रीजन के कमिश्नर हैं वो उसकी रिपोर्ट देंगे। लेकिन अभी एनडीटीवी के हाथ में एक दस्तावेज लगे हैं, नगर आयुक्त की तरफ से ये दस्तावेज हमें दिए गए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने टीम गई थी उसका स्टेटस जो है वो 2017 में इस तरीके से था। आप देख सकते हैं कि खाली लैंड पड़ी हुई है, लेकिन वही जब 2023 में आती है तो इस लैंड पर आप देखिए कि कितने जो है अवैध अतिक्रमण यहाँ पर बन गए थे। जो इस अवैध अतिक्रमण को करने वाले शख्स हैं अब्दुल मलिक, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये बताया जा रहा है कि एक पूरी तरीके से संगठित गिरोह चल रहा था सरकारी ज़मीन को पहले कब्जा करने का, और उसके बाद में उस सरकारी ज़मीन को 50 रुपए के स्टाम्प पर दूसरे लोगों को बेचने का। ये भी जांच में सामने आया है। अब तक की जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें ये भी सामने आया है कि जब अतिक्रमण की टीम पहुंची थी तो अब्दुल मलिक, जो कि उस ज़मीन को, जो कि नज़ूल की ज़मीन है, उसको वो अपना बताते थे, उन्होंने टीम से जो है वो फिजिकली भिड़ने की कोशिश की, झगड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद में उनको हटाया गया, और फिर आधे घंटे के बाद में अचानक जो है वो मॉब ने पथराव करना शुरू कर दिया, और इसके बाद में वहाँ पर इस तरीके से हिंसक हुआ कि उसमें 5 लोगों की जानें चली गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं।
दूसरी बात यह है कि अब जो है वो जिला प्रशासन कई सारी जांच कर रहा है और ये जांच कर रहा है कि आखिर कौन कौन सी सरकारी जमीन और है जहां पर इस तरीके से अवैध कब्जा करके और उसके बाद में उसको बेचा जा रहा है, तो उस पर भी अब जांच हो रही है। फिलहाल अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ में आधा दर्जन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक चीज और जो है सोशल मीडिया पर और भी हम लोगों के पास में भी दस्तावेज आए हैं कि जब वहां पर बनफूलपुरा में अतिक्रमण हटाने टीम गई तो क्या उनके पास में पर्याप्त पुलिस फोर्स था, क्या उनको जानकारी थी कि ये संवेदनशील इलाका है। उस पर भी अभी मेरी बात हुई नगर आयुक्त से, उनका कहना था कि उनको जानकारी थी और उनके पास में पर्याप्त पुलिस फोर्स था जब वो अतिक्रमण हटाने गए थे। Right, thank you Ravish for joining us and bringing us those updates from the ground. Continue tracking these details for us. The reports say Pakistan's former Prime Minister Nawaz Sharif and PPP's Bilawal Bhutto Zardari have agreed to join hands to form a coalition government as independents backed by Imran Khan race ahead in the national elections. Now, there is no clear majority or no clear winner seen as of now, and neither party managed to achieve majority on their own. Current figures show independents winning 99 seats, falling short of the 133 majority mark despite being the largest group. Now, the countdown to the biggest festival in the world's largest democracy has started and everyone is preparing for the 2024 national elections. India's future is the youth, and to support the goal, NDTV is launching the hashtag NDTV18Kavote campaign to make the youth aware of the need to vote. Our aim is to encourage voters aged 18 to show their strength in the 18th Lok Sabha polls. You can send us your video messages on NDTV18Kavote and we'll show them on air. Often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. जब हम अपने एयरफोर्स और अपने जवानों के पास आते हैं, सेना के लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग किस्म का जोश होता है। और आपके लिए यहाँ पर तेजपुर पे आना, कुछ यादें वापस आ रही हैं? आप यहाँ पहले आए हुए हैं? देखिए, मैंने ऊपर वाला से चाहा था कि जब मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था तो मैं वापस आऊँ यहाँ। तो मैंने यही कहा था, चाहा कि जब आप लोगों ने मुझे कहा कि ये शो जय जवान जो मेरा फेवरेट शो है, आप लोगों कि मुझे ये इट्स माय फॉर्च्यून और माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी ऑन दिस शो, तो मैंने कहा कि तेजपुर में करेंगे। सो द लाइफ कम्स फुल सर्कल, क्योंकि मैंने यूनिवर्स में भेजा था कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ आपके साथ और इस शो के लिए, आपके शो के लिए। So beautiful. Thank you so much and it's such an honor to have you. और आज पूरा दिन हमारे सामने है, हम देखेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। पूरी तैयारी जो होती है लड़ाकू विमान उड़ाने के पहले, उसको भी हम आज दिन भर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारे फाइटर क्राफ्ट्स को निकालने के पहले टो किया जाता है। सो दिस इज द टोइंग व्हीकल। हम यहाँ इसमें चलेंगे, देखेंगे किस तरह से सुखोई इसको टो किया जा रहा है। लेट्स गो।
बहुत ही कमाल का और बहुत स्पेशल एहसास है कि हम इसमें बैठे हुए हैं और इसको इतनी टनों भारी इस सुखोई जो सुखोई 30 MKI है ये अपने हैंगर से निकल रहा है और ये टो किया जा रहा है उड़ान भरने के पहले। आप लोग तो यहाँ पर पिछले दिनों आए और आप लोगों ने शूटिंग की, तो आपको काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस मिला होगा कि किस तरह से हमारे फाइटर क्राफ्ट्स, बल्कि फिल्म जो है फाइटर, उसमें इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, समझने का, देखने का, कैसे हमारी एयरफोर्स और एयरमैन काम करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली बड़ा मुझे तो ऐसा लग रहा है घर वापसी है मेरे लिए। एंड और सबसे मिलना, भाइयों से मिलना और पूरे टीम मेंबर्स और जिन्होंने मेरी सबकी, हम सबकी और इस फिल्म की बहुत ही, इनके बयान नहीं आते तो ये फिल्म जो आप देख रहे हैं वो देख नहीं सकते आप। सब ने जो भी काम किया है फिल्म के अंदर और जो जो डिटेलिंग हुई है हर चीज़ की, वी आर जस्ट वेरी वेरी प्राउड दैट वी हैव सच अ ग्रेट ऑफिसर्स एंड ग्रेट एयरफोर्स। बहुत बिल्कुल, बहुत ही खास मौका, बहुत खास लम्हा है और आप वापस आए यहाँ पर। इट जस्ट शोज हाउ स्पेशल द एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन फॉर यू। नहीं, एक्चुअली सुखोई में बैठना, सुखोई को देखना, उनका टेक ऑफ, उनकी लैंडिंग आसमान में, वो समथिंग एल्स। जब आपने पहली वो यूनिफॉर्म पहना होगा जो आपके लिए बनाया गया होगा, वेरी स्पेशल फीलिंग, नो? पहले मैंने जब मैं सबको देखता था तो मुझे लगा बड़ा आसान होगा देखने में, मगर जब मैंने पहली बार पहना, मैंने नहीं, आई हैव टू बिकम फिट अप, आई हैव टू लुक बेटर, सो फॉर दैट टू गेट इनटू दैट यूनिफॉर्म, इतना फिट नहीं हूँ अभी जितना मैं था जब मैं शूटिंग कर रहा था मगर उसके लिए मैंने काफ़ी वजन भी कम किया और I had to reduce in inches to get into that uniform so that I give full respect to that beautiful uniform of a fighter. I play a commanding officer in fighter, so it was for me that was a big challenge. You tell us a little bit, what is fitness for you? आपके लिए क्या मतलब है इसका? Me, I think it's a way of life. It's a religion. It's like brushing your teeth. Ayodhya, the birthplace of Lord Ram. This is where the story of Ramayana started. There is a place of utmost importance called the Lanka, or in modern day known as Sri Lanka. And since then, the ties of India and Sri Lanka have been connected, not just economically, but also culturally. I have with me Sri Lankan leader Namal Rajapaksa, who is here on his visit to Ram Temple. Mr. Namal, how do you see cultural ties envisioning between India and Sri Lanka with the Ram Temple? Well, as you correctly stated, the relationship between Sri Lanka and India, not only diplomatically and economically, but we have a long-lasting cultural and religious relationship between the two nations, and I think this is what bonds us as Sri Lankans and Indians. And I believe even in Sri Lanka, the Ramayana circuit, or Ramayana trail we call it, is very popular among Indian devotees, and there are many Indian devotees who travel to Sri Lanka. And I believe it is the time that we strengthen and promote the Ramayana circuit among Indian pilgrimage. And also I believe Anuradhapura, the Atamasthana, Sri Mabodhin Mahansa at Vanvelisaya, it's something that the Indian or the Ramayana circuit devotees can go, and visitors go and can get blessings in Sri Lanka. So I believe our relationship should be strengthened not only economically and diplomatically, but it has to take to the next generation on a cultural aspect as well. It has to be taken to the next generation. So are there any plans between the two nations to promote this religious tourism, especially because it is India and Sri Lanka, sharing back historical ties? Well, yes, I would like to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi as well. I was here in UP a couple of years ago, when at the inauguration of Kushinagar Airport, which is the spiritual city for Buddhism in UP, I believe. So today I'm in Ayodhya. So Indian government has been very much active when it comes to promoting cultural tourism and religious tourism between the two nations. And I believe even the Sri Lankan government and Sri Lankan citizens are very much keen on strengthening the cultural and religious tourism between the two nations. And I would like to invite the devotees who travel to Sri Lanka to visit the Ramayana circuit, to visit Anuradhapura
and to get blessings from Sri Mahabuddin Vahanse and also from Ranvali Sahib. In what ways you think, Ram Temple, can promote peace and stability in the region, especially when it comes to cultural diplomacy? Well, I mean, the diplomacy is not only at the political aspect and also economic angle of it, but it has always been cultural and religious. So I think this is a place for all the Hindus in the global circuit to come and visit at least once in their lifetime and get blessings from Ram Temple. And also Sri Lanka is a place for all the Hindus and Buddhists to come and get blessings at least once in their lifetime. One last question, Mr. Namal. What message would you like to convey Indians and Sri Lankans, especially within the significance of the fostering relations between the two countries? Well, I would like to thank Indian government and people of India. They stood by us during the difficult time, and it was the Indian government, Prime Minister Modi himself, who came forward to give us $4 billion at that time. And today the Sri Lankan tourism is booming, and #1 arrivals have become Indian tourists who come to Sri Lanka. So India has always been with Sri Lanka, and Sri Lanka has always stood by India. So I believe this is the message that the regional relationship between the diplomatic relationship between the two countries, and it has now gone back to the historic cultural and religious relationship that we both had. So India has always stood by Sri Lanka, and Sri Lanka has always stood by India. Thank you so much, Mr. Namal, for speaking to us. That was Namal Rajapaksha. He's the first Sri Lankan leader to visit Ayodhya. We'll continue tracking these stories for you. For now, we take a short break. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. "10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. Banega Swasth India. One world hygiene. Welcome to the news. No time to read the morning newspaper or follow TV bulletins all day? No problem. That's where we step in. Tune into the news with NDTV, a brand new podcast that brings you the day's 5 biggest stories in just 10 minutes. Added bonus, a piece of good news you can look forward to every evening. So sit back, relax, and catch up the news with NDTV. Starting 12th of February, Monday to Friday, 6:30 every evening. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर और उनसे इस वक्त बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की। अनिल जी, आपको बस जल्दी जल्दी हाँ ना में बताना पड़ेगा। खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? नमकीन। योगा या जिम? जिम और योगा, सॉरी, बोथ। वेट्स या फ्री हैंड? वेट्स। मोस्ट कंफर्टेबल विद विच एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एनी फेवरेट डायरेक्टर्स? डैनी बॉयल, शेखर कपूर, quite a few of them.
हर्षवर्धन आपकी सुनते हैं या अपनी मम्मी की? किसी की नहीं सुनते। सोनम आपसे ज्यादा क्लोज है या मम्मी से? मम्मी से। घर में किसकी ज्यादा चलती है? मम्मी की। मम्मी की, आपकी मम्मी की? मम्मी मतलब सुनीता, सोनम की मम्मी और हर्ष की मम्मी और रिया की मम्मी। What's fitness for you? Way of life. What's your favorite sport? Hello and welcome. You're watching India Global. I'm Vedant Agarwal. Well, a big lead on the show this week. Nawaz Sharif has claimed victory, though without a majority. Pakistan now headed for a coalition government most likely, but Nawaz Sharif's dramatic return to Pakistan as a Prime Minister seems imminent. And well, those are visuals coming in of Nawaz Sharif addressing a huge crowd there. We'll get all perspectives on the show, but first up, the headlines this week. Nawaz Sharif's victory lap, but without a majority. Pakistan heads for a coalition government led by Nawaz. That is a question right now. Allegations of rigging fly thick and fast. Big question. A military oversight behind Nawaz Sharif's return. That's a big deal. But Pakistan polls marred by violent attacks. Pakistan Interior Minister claims a peaceful poll. Meanwhile, Pakistan Minister says only 4 lives lost in poll violence. US, though, condemns the twin blasts and the internet suspension. UN Secretary General, too, expresses concern. In the US, a big victory for Trump in Nevada. Trump wins Nevada's Republican caucuses. Trump's third primary victory ahead of polls. Biden, too, bags the Nevada primary. After India announces the fencing of the Indo-Myanmar border, free movement between the Indo-Myanmar border is scrapped. Leave immediately, says India to citizens in Rakhine. Well, India keeps a close eye on the security situation. Unfortunate news from the UK. King Charles diagnosed with cancer. Queen Camilla says the king is doing extremely well. Prince William, meanwhile, steps up to lend a hand. The estranged prince visits the king in his time of trouble. And with a big lead on India Global this week, Nawaz Sharif has declared victory, even though he has admitted that he didn't have a majority. Pakistan now seems to be headed for a coalition government, with Nawaz Sharif poised to be the next Prime Minister. Some interesting trends also coming in. Hafiz Saeed's son suffered a humiliating defeat. Bilawal Bhutto, meanwhile, has won. But what seemed to be the biggest surprise of the Pakistan elections was that even though Imran Khan was in jail and his party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, was barred from contesting elections, the independents, backed by the PTI, have performed increasingly well. The unofficial leads favoured the Pakistan Tehreek-e-Insaf backed independents. So some sort of a victory there for Imran Khan in jail, even though Nawaz Sharif is set to return as a Prime Minister with a coalition government. Many sort of controversies also that the Pakistan polls saw, from poll violence to rigging charges as well. In fact, the US also expressed concerns. Let's take a deep dive into what actually happened and what are the ramifications of the Pakistan elections. Joining me on India Global this week, Andrew Whitehead, a British journalist, somebody who's a very close Pakistan watcher and the subcontinent watcher indeed. Also, Dr. Saeed Elahi, a former Member of Parliament, is also with us. He's a senior leader of PMLN, which is Nawaz Sharif's party. Also, Maid Ali, veteran journalist and a political analyst from Pakistan. Thanks very much, gentlemen, for joining us on India Global this week. Going across to you first, Mr. Whitehead, how do you see the poll outcome? Was it on expected lines? Well, it does seem as if many of the world's biggest democracies are in a bit of a loop tape. You see that in the United States as well. So if Nawaz Sharif comes back as Prime Minister, good for him. But it's clear that Imran Khan and his independent candidates have done much better than anybody was expecting. And of course, there are quite loud and insistent suggestions of irregularities in the voting and more particularly in the counting and the announcing. I don't know how much strength those suggestions hold,
But clearly it's deeply worrying, and the delay in announcing the results and the initial counting is also worrying. So I think it does raise question marks about how rigorous the democratic process is in Pakistan. Absolutely, and Dr. Saeed Elahi is also with us. Dr. Elahi, you know, we saw Nawaz Sharif make that victory speech there. Madam Nawaz also standing next to him. Mr. Shehbaz Sharif also there. But were you confident that Nawaz Sharif is now set to make a dramatic comeback as Prime Minister, even though Pakistan seems to be headed for a coalition government now? As I can assess and evaluate, the results are not very much different from the last 2 elections, because there are 4 provinces in KP, Khyber Pakhtunkhwa. The PTI is leading and they will form the government, because as they have done in the past. Punjab will remain with PMLN, which is Nawaz Sharif's party. Sindh with People's Party, Mr. Bhutto's family. And Balochistan is always a coalition government. So this will happen again this time. The question about becoming Prime Minister regarding Mr. Nawaz Sharif is very important, because if PMLN is having majority seats in National Assembly, obviously the new coalition will be as it was in PDM government for 16 months by end of Mr. Imran Khan's government after the no confidence move. So I think the future government in Pakistan will be again a coalition, and all parties from all over the country will join hands. And I think the majority of independents from Punjab and KP will join different parties of their own choice, because they will see which party is forming government and becoming powerful. For example, in Punjab, PMLN is leading, so most of the independents will join them. In Sindh, People's Party, and in KP, this is still to be decided, because the independents are, most of them are from PTI, which was not a party allowed as a party to contest elections. So that point about independence, that's very interesting, because now how the coalition government is formed, that largely hinges upon the independents. Mayad Ali, what do you take away from the surprising results of the PTI-backed independents? I mean, they performed exceedingly well in more than 40 seats. I will say that it is very heartening to see that a party that was in the establishment tried to sort of crush came out with all difficulties, because Pakistan, majority of people are not that literate, you know, as compared to any other country. So they had to remember symbols. Even that minute point was very vital for any party or candidate to win the election. That is the difference between winning and losing. But still, the people managed to remember the symbols of their respective candidates in their respective constituencies, and they came and they voted out and numbered, and it was overwhelming. I saw it myself, you know, I was there. I voted also. So it was overwhelming. And the results have been very positive as far as Khyber Pakhtunkhwa is concerned, because they were trying to eliminate PTI from all across, which they couldn't, because they knew the repercussions, the backlash from Khyber Pakhtunkhwa could have been massive, which couldn't have been sort of countered, because the anger among the Pashtun population is relatively more than the rest of the country. But you know, Mr. Whitehead, whenever we talk about Pakistan and democracy in Pakistan, we have to talk about the military establishment as well. Do you think it's military oversight and the military that actually scripted Nawaz Sharif's return as Prime Minister, whether it was his dramatic comeback and then subsequently Imran Khan's jail as well? Well, all the way through, almost from the beginning, the military has put its hand on the scales, so to speak. It's just about impossible to win an election in Pakistan unless you have at least the goodwill of the army and of intelligence. And that is regardless of how much
popular support you have, I suppose it's at least encouraging that the military is not ruling themselves and that they are going through a democratic process. I mean, Pakistan, as you know, has had long periods of military rule with generals ruling the country. And at least if the generals are back in their barracks, that's an improvement. But there is something clearly deeply flawed about how Pakistan's democracy works. And the reason for that mainly, not exclusively, but mainly is the way that the army and military intelligence insists on ensuring that its preferred candidate wins. And that was actually very visible in these elections as well. Dr. Elahi, as a senior leader of the PMLN, how would you respond to the Pakistan Tehreek-e-Insaf's charge that these elections have been rigged? My dear, rigging charges are part of elections. In Pakistan or in surrounding all countries where there are elections, the one who wins says fine, the one who loses blames of rigging. So I think the charges of rigging are not correct, but small little riggings are part of every constituency. It happens. It is not that it is always transparent and clean, because sometimes there are pressures, sometimes there are rigging, sometimes there is corruption. So many things together can add some rigging into different elections. All right, gentlemen, stay on with us, but let's take a look at how, the developments panned out in Pakistan today. Of course, it was a dramatic prelude to the Pakistan elections. There was some poll day violence as well. But take a look at this report to understand how these elections panned out and what are the ramifications. मैं एक दफा नहीं कई दफा कह चुका हूँ I love you too. Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif's big return to politics. Maryam Nawaz has also won from Lahore. खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते. अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चलें. लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें. Independent candidates who are mostly backed by Imran Khan's PTI party are ahead in the race to the top, according to latest trends. Cutting across to Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto too registered a win with his party straddling at number 3 for most of the day. Mumbai terror attack mastermind Hafiz Saeed's son suffered an embarrassing loss. But it hasn't been all hunky-dory. The counting began last night and the initial trends leaned towards PTI-backed independence. Soon after, the counting seemed to slow down, prompting allegations of rigging. Several unverified videos to this effect are also doing the rounds on social media. 7 घंटे की मुशक्कत के बाद मुझे के दफ्तर जाने दिया गया और सुबह के टाइम पे मैं आप लोगों से वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ. मुझे ज़बरदस्ती पुलिस ने ड्रैग करके ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से बाहर निकाला और मेरे जो चीफ पोलिंग एजेंट है उसको भी बाहर निकाला और रिजल्ट वो अनाउंस नहीं कर रहे. मैं हारी नहीं हूँ और ना ही मैं हारी हुई लीडर हूँ. डेरा गाजी खान जीत चुका है, मैं इन्हें 185 जीत चुकी हूँ. Sporadic violence spilled over from polling day to counting day too. But Pakistan's caretaker interior minister described the elections as the most peaceful and well conducted in recent history. We have had the most peaceful and most organized election of recent history in Pakistan, and we are proud to hold this election in that manner. Pakistani media is reporting that Nawaz Sharif's party is in touch with the independent candidates who seem to have sprung a surprise by breezing past Nawaz's PMLN party.
Sharif and his party reportedly have the Pakistan Army's backing. With Vishal Vivek, Bureau Report, NDTV. So fascinating there how the independents have sprung a surprise. But the question we are really asking, is it military oversight that has scripted Nawaz Sharif's return? Mr. Vital, let me go across to you again. Even though Nawaz Sharif is now poised to take over as a prime minister, do you see this as an end to the political instability and, of course, consequently the economic turmoil in Pakistan as well anytime soon? I mean, it would be nice to be optimistic, but there aren't very much grounds for optimism. And there is certainly a democratic temper there. You can see by the scale of the turnout. And indeed, whatever you think about Imran Khan, he has been hugely effective, even though behind bars and with the army and the authorities trying to make every step along the way difficult, denying him election symbols, not allowing his party to stand. He has done exceptionally well in mobilizing his support, and his support seems to be hugely considerable, put it like that. But stability, I don't see it. I'm afraid I don't see it. If Nawaz Sharif does emerge as prime minister, there will be inevitably questions about whether the electoral process was free and fair. It does look as if Imran Khan's supporters will have sufficient numbers in the National Assembly to be quite a considerable counterweight. So we don't know the outcome yet, but I'm not deeply hopeful of stability on the political and, because of that, on the economic front either in Pakistan. So that's an important point then. Dr. Elahi, as a politician yourself, do you feel that the military is still calling the shots as far as Pakistan is concerned, and this really, perhaps as many would call it, was a sham election? I think it is not only military. The problem is that in Pakistan is a security state, you know very well. So in Pakistan, the establishment has a very strong role. It is not only army, civil bureaucracy, other departments. They are strong in Pakistan, and obviously they can influence. But this time, as I know, and I have been roaming around, there was no interference or pressure from army or civil bureaucracy. They were quite independent. Even I met some of the deputy commissioners and commissioners in different areas. They were very free and fair. All right. But I think perhaps the biggest takeaway is how the PTI-backed independents have really performed, and that's a big hope for democracy in Pakistan. Gentlemen, thanks very much for joining us on this very crucial day for India's immediate neighbor. And well, our big story, well, as there's another chapter in Pakistan's turbulent politics, let's take a look at how Pakistan has taken many shots at democracy and how it has been a spectacular failure. 30 prime ministers and not even a single one has completed a full term. And also, how have these prime ministers and presidents in Pakistan dealt with India? Because, of course, we are looking at the impact of these polls and its outcome on India as well. Here's a report. 3 constitutions, 3 military coups and 30 prime ministers, all overthrown before their 5-year term. Pakistan's failed tryst with democracy, a story over 70 years in the making. Enter General Zia-ul-Haq, who unleashed the most repressive military regime Pakistan has ever seen. Zia-ul-Haq changed the course of Pakistani politics forever. He changed Pakistan's parliamentary democracy to a semi-presidential system, making it easy for the military to exercise power over politics. Now on, the military would not have to execute a coup to seize power. It was under Zia-ul-Haq's oppressive regime that Pakistan saw massive resistance from the people, who came out in defiance, protesting against the dictatorial rule, demanding their democratic rights for the first time. Zia died in a plane crash, paving the way for Zulfikar Ali Bhutto's daughter Benazir's dramatic entry into politics. But military oversight ensured her political rival Nawaz Sharif's election as Prime Minister for the first time. Under Nawaz Sharif, India-Pakistan became closer than ever before.
with Vajpayee's visit to Lahore. His historic bus ride to Lahore sparked hopes for Indo-Pak peace amid the impending Kashmir issues. But Sharif's glory days soon faded. The military helped Benazir overthrow him, and with this, ties with India also plummeted. General Pervez Musharraf thwarted the oversight system, overthrew the democratic rule, and waged the Third War against India in 1999. With India's capture of Tiger Hill, Pakistan was defeated in the battlefield again, and Musharraf's quest was a spectacular military failure. The decade following the Kargil War saw Musharraf, now President of Pakistan, as the dominant political figure, with Benazir and Nawaz in exile. I go back to show to the people of Pakistan that their sister is ready to mobilize the moderate middle and to fight to reclaim Quaid-e-Azam's Pakistan, for which my father and so many others gave their lives. In a turning point for Pakistan, Benazir was assassinated in Larkana, her hometown, upon her return. President Musharraf was accused of murdering her, and all hopes for a possible return of democracy. He stepped down as president, and Benazir's husband took over. Terrorism in Pakistan was at its peak in the 2000s, and India bore the brunt, with Islamabad becoming a breeding ground for terrorists and extremists. These elections also marked the entry of the military's favourite and former cricketer Imran Khan, outperformed by his arch nemesis Nawaz Sharif. But as Imran rose to power as the army's Ladla, the military kept pulling the strings, and Pakistan's doublespeak on terrorism continued. But post-2014, India's foreign policy saw a dramatic shift, with Pakistan completely isolated by New Delhi. जब तक पाकिस्तान में ये सोच है कि आतंकवाद के दबाव से भारत को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, इसको हम कभी हमारे लिए ये कभी मंजूर नहीं होगा. India's surgical strikes against Pakistan terror camps in 2016 was a watershed moment in New Delhi's dealings with terror in the subcontinent. This in retaliation to the September Uri attack, which killed 20 Indian soldiers. In 2019, the abrogation of Article 370 triggered Pakistan to downgrade diplomatic ties, seize all trade with India, and suspend cross-border transport services. The Imran Khan government even termed India's move illegal and unilateral. In a prelude to polls in Pakistan, cross-border terrorism resurfaced, with the Rajouri-Poonch trail becoming a hotbed of terror. As Pakistan goes to the polls amid a changing geopolitical environment, the stage is set for Nawaz Sharif to make a dramatic comeback with the Kaptan out of the game. Nawaz Sharif has vowed a message for peace for India in his manifesto. But with the military calling the shots for decades, one thing that India has learned is not to trust its volatile neighbour. And the jury is still out on whether 2024 will see a thaw in India-Pakistan ties. With Vedant Agarwal, Bureau Report, NDTV. And moving now to the other big elections this year, well, in the US polls, Donald Trump has moved a step closer to becoming his party's White House bearer in what looks like a rematch with Joe Biden. He's certainly the front-runner in the Republicans' nomination race, and in a big shot in the arm, he won the Republican caucuses in Nevada and the US Virgin Islands. What are really its ramifications? Here's a report. Sort of knew who was going to win. You get 98%. We wanted to get over 80, and we got 98. And also, if you remember, and last night, you know what happened last night, right? None of the above. So I'd like to congratulate none of the above.
A triumphant Donald Trump after he won the Nevada Republican caucus by a whopping 98%. Trump has now won contests in 3 states, Nevada, Iowa and New Hampshire. This shot in the arm comes as he awaits the verdict in perhaps the most crucial case, his appeal against a Colorado Supreme Court ruling. The point in question is whether he is eligible to run again for president because he violated a provision in the 14th Amendment preventing those who engaged in insurrection from holding office. This comes after a US court ruled that the billionaire is not immune to prosecution. The US appeals court said that Trump does not have presidential immunity and can be prosecuted on charges of plotting to overturn the 2020 election. This is a big blow to Donald Trump, who has been saying for years that presidential immunity protects him from multiple cases. He is expected to file an appeal in the case after the Trump campaign said that future presidents could be immediately indicted after they leave office. On the other hand, the US presidential election race is heating up. While President Joe Biden won the Nevada Democratic primary, Republican nomination contender Nikki Haley suffered an embarrassing defeat in the GOP primary of the same state. Though legal wars may feel like a pebble in Trump's shoe, it is almost certain it will be a showdown between him and Biden come November. With Vishal Vivek, Anasya Mathur for NDTV. So, well, it's going to be a hectic election year. Lots happening on the geopolitical and diplomatic front as well. And you know where to come for all the updates every Friday, India Global on NDTV. For now, goodbye. Salam UAE, the ultimate reality awards is here to recognize the contribution of real estate companies and property developers in building the UAE. It's a small step to honor their journey and success stories in building the property landscape in UAE. It's indeed our pleasure to meet you at the Ultimate Realty Awards in Dubai. See you on the 17th February. हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर और उनसे इस वक्त बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की। अनिल जी, आपको बस जल्दी जल्दी हाँ ना में बताना पड़ेगा। खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? नमकीन। योगा या जिम? जिम और योगा, सॉरी, बोथ। वेट्स या फ्री हैंड? वेट्स। मोस्ट कंफर्टेबल विद व्हिच एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एनी फेवरेट डायरेक्टर्स? डैनी बॉयल, शेखर कपूर, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। हर्षवर्धन आपकी सुनते हैं या अपनी मम्मी की? किसी की नहीं सुनते। सोनम आपसे ज्यादा क्लोज है या मम्मी से? मम्मी से। घर में किसकी ज्यादा चलती है? मम्मी की। मम्मी की, आपकी मम्मी की? मम्मी मतलब सुनीता, सोनम की मम्मी और हर्ष की मम्मी और रिया की मम्मी। What's fitness for you? Way of life. What's your favorite sport? Badminton at the moment. Who's a better actor, Sonam or Harshvardhan? Both. Better actor. Both are great actors, good actors. They have to work hard and become better. What do you prefer now? आपको क्या ज़्यादा पसंद है? Long format या फिर फिल्में? Both, I think. You know, it's very, because I think I've done both. And I have enjoyed doing both of them. You know, I did a long format, I did 24 and I did Night Manager. And of course, फिल्में तो मैं बचपन से कर रहा हूँ. Any all-time favorite film? Mr. India, yeah, it's my all-time favorite film. Yeah, it's a lovely film, wonderful film. I revisited it again when I did one of the ads, and there's something very, you know, something which really it's stood the test of time. Yeah. You know, like your preferred genre for film, comedy or action? Comedy, because comedy is something which you know, you can do it, or you have it, or you don't have it. Their lighting, director, music, background music that cannot help you. You have to do it yourself. You know, with action and with dramatic scenes, and with anger and violence, sex.
there's a lot of things which can really help you in that, जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, ऐसा लगता है बहुत जबरदस्त काम हो रहा है. कॉमेडी में सब चलेगा नहीं, कॉमेडी में खुद कर रहा हूँ. सोशल मीडिया पसंद है आपको? Are you on Instagram? Yes. What is Gen Z for you? Gen Z for me. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Another Indian origin man has reportedly been killed after an altercation in downtown DC. A 41-year-old executive, Vivek Chandar Taneja from Virginia, died this week, days after the police said he was knocked to the ground and hit his head during an altercation outside a restaurant. The incident has been ruled a homicide, but no arrest has been made, although the police have now released the image of the suspect. No details of the nature of the altercation have been mentioned. The police report says that Taneja, accompanied by two people, left the restaurants at 2 a.m. and was on 15th Street. An argument turned into a physical altercation, and Taneja was knocked to the ground by the suspect and hit his head on the pavement. Authorities said Taneja lost consciousness and was taken to a hospital in critical condition. Police said that he died 5 days later. In the wake of recent incidents involving the deaths of Indian students in the United States, U.S. Ambassador to India Eric Garcetti reassured that Washington is committed to making sure that United States remains a safe destination for Indian students. Speaking on the unfortunate loss of Indian lives, Ambassador Eric Garcetti said, and I quote, "Our heart always is touched when any tragedy occurs, whether it is a life taken by somebody or by any violence. No matter who they are, we are very committed to making sure that Indians know that the United States is a wonderful place to study and to be safe." 5 deaths of Indian students in the US have been reported this year. However, 2 were Indian nationals and the remaining 3 were of Indian origin. And we're very committed to making sure that Indians know that the United States is a wonderful place to study and to be safe. We have more Indians studying in the United States than any country in the world. Over 200,000 visas that were granted just last year alone. So we know tragedies will happen. It's our responsibility to make sure that we work together with the Indian government and people know what they can do, and our hearts go out to the families, of course, in any of these tragedies. Pakistan is headed for a coalition government as neither side managed to gain majority numbers. The general election in Pakistan threw up a surprise, with Imran Khan-backed independents getting most number of seats. As per the latest, Imran Khan's backed independents got 96 seats, Nawaz Sharif's PMLN 69 seats and Bilawal Bhutto's PPP with 52 seats. Imran Khan is in jail in a corruption case, but his party PTI released an AI-generated video where the former Prime Minister claimed victory. But another former Prime Minister, Nawaz Sharif, also gave a victory speech saying his party has emerged the largest and urged others to join him in coalition. मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। एक्सक्यूज मी, मरीम नवाज साहिबा, बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। The death toll in Uttarakhand's Haldwani has risen to 5. This is after an anti-encroachment drive turned deadly, leading to stone pelting and arson. Though no violence was reported on Friday, there is heavy security deployment in the hill town. Net services are suspended and curfew has been imposed in several areas. In Najafgarh, 2 people have been killed in a brazen daylight shooting. The incident, in which 2 men were killed, was reported from a salon in southwest in Delhi's Najafgarh, according to the police. The 2 attackers fled away after the attack, according to the CCTV footage.
The victims, identified as Sonu and Ashish, were in their early 30s and received multiple gunshots in front of other customers and workers. The two attackers fled away after the attack. The cops suspect the case is of personal enmity and are also, in fact, saying it is possibly a gang war. The Parliament has passed the anti-cheating bill. It aims to curb exam malpractice in public exams. The bill was passed through voice vote in Rajya Sabha. Under the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill, only those who leaked exam papers or tampered with answer sheets by colluding with government officials will face up to 10 years in jail and a fine of 1 crore rupees. Remember, this development comes amid several exam cancellations due to paper leaks being reported in states. Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang on Friday announced the reinstatement of the old pension scheme for state government employees appointed on or after April 1, 2006, a significant step taken ahead of the state assembly elections. Sikkim becomes the first state in the northeast to implement this decision ahead of the state elections slated for later this year. Meta has removed the Facebook and Instagram accounts of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's Facebook and Instagram accounts are no longer available. According to Meta, the accounts have been disabled, which means they have permanently been removed. Meta says we have removed these accounts for repeatedly violating our dangerous organizations and individuals' policy. The policy does not allow organizations or individuals that proclaim a violent mission or are engaged in violence to have a presence on Meta. This includes those who glorify, support or represent terror organizations designated by the US government. Those were the stories we were tracking for you. For now, short break. Welcome to the news. No time to read the morning newspaper or follow TV bulletins all day? No problem. That's where we step in. Tune into the news with NDTV, a brand new podcast that brings you the day's 5 biggest stories in just 10 minutes. Added bonus, a piece of good news you can look forward to every evening. So sit back, relax and catch up the news with NDTV. Starting 12th of February, Monday to Friday, 6:30 every evening. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy, but doesn't loosen too much. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you.
India is going through a massive churn in the way directors are going to, one, get appointed, two, get evaluated, and three, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value addition as they could be. So as a norm, I would say you really use the independent directors to benefit the company in its approach to creating value for all its stakeholders. India is going through multiple transitions. There is a disruption which hits India, I mean, the world, I should say, not just India, every 6 months, 9 months. Now, in that context, how do you keep your organization safe and also primed for the future? And I think that's where the role of independent directors is somebody who can independently, if I may call it so, continue to challenge the management and guide them. If a director is to be responsible for every single thing, I think it's asking too much. And there have been numerous instances you could. India squares off against Australia in a Cricket World Cup final, but this time in the Under-19 World Cup. Both the teams are on an unbeaten run in the tournament so far, but who will blink first? Here's a report. A heartbreaking loss in the final of the ODI World Cup just a couple of months ago. But it's time for redemption for the Coals, taking on their arch rivals and hoping to set the score right. After the ICC World Test Championship and ICC Men's Cricket World Cup last year, it is the third ICC event on the trot that sees India and Australia in a final. And revenge will be on the minds of Team India. For India, Uday Saharan, the young captain, has led from the front, accumulating 389 runs in the tournament so far, the most ever by an Under-19 Indian captain. India will be hoping for him to fire, along with other star batters like Mushir Khan and Sachin Das one last time. मैं खुद पे बिलीव कर रहा था, बस मैंने यही सोचा था कि मैं आखिरी तक खेलूंगा. एक पार्टनरशिप की बात है और उसके बाद गेम हमारा हो जाएगा. बस मैं यही सोच रहा था कि आखिरी तक जाना है, आखिरी तक जाना है. Australia's dominance in ICC tournaments seems to have transcended from the senior side to the Under-19 team. And the Aussie captain Hugh Wigan will be hoping for another strong effort from his fast bowlers. Speaking to ICC, the Australian captain said, India are a class team. They will come out and compete hard. We love that challenge. We love that fight and we are looking forward to it. India have reached the final of the Under-19 World Cup a record 9th time, winning 5 of those. Can the men in blue win against a formidable Australian side on Sunday to make it number 6? Usama Shab for NDTV. Now, OnePlus recently launched one of the most anticipated TWS earphones in India, the OnePlus Buds 3, and Technical Guruji is taking a closer look at the new earbuds on this week's episode of Gadgets 360. Take a look. शो में हमेशा गैजेट्स की बात करते हैं, नई नई चीजें आपको दिखाता हूँ, एंड अ यूनिक फैक्ट अबाउट दीज गैजेट्स इज दैट समटाइम्स दे गेट वेरी टाइनी, और इतने छोटे कि वो सीधे अपनी पॉकेट में आ जाते हैं, इनफैक्ट मुट्ठी में भी आ जाते हैं. You know, this technology is getting smaller day by day, और कुछ सालों पहले ही हमारे पास में वो छोटे वाले एयरपॉड्स आ गए थे. Starting then, आज हमारे पास में it's a trend that everyone's wearing these small little truly wireless earphones, and this is something latest from OnePlus. These are the all new OnePlus Buds 3. They are very unique in two ways. One is that जब इनको पहन लेते हैं तो for controlling these you have this touch panel जहाँ पे आप slide जब करते हैं, by just sliding up and sliding down you can control your volume. And second unique fact is that these are with dual drivers. Yes, so it has a 10.4 mm driver for your good bass, and then there's a 6 mm driver acting as a tweeter for all other higher frequencies. So काफी unique ये buds हैं. Have a closer look and know more about these OnePlus Buds 3. इन ईयरबड्स ने ऑलरेडी 5,000 रुपीज एंड नियर बाय वाले सेगमेंट को शेक कर दिया है. OnePlus हैज ऑलरेडी पोस्टेड दैट दीज ईयरबड्स हैव अचीव्ड द हाईएस्ट डे वन सेल्स फॉर एनी OnePlus TWS प्रोडक्ट.
देखते हैं what is working for them. They are quoted at an MRP of 6499. Launch offer पे 5499 में available हैं. Add some bank offers and you can get them for as low as 4499. Which means ये अपने quoted MRP pricing से 2 tier नीचे आके compete कर रहे हैं अभी. You can get these in 2 colors, splendid blue and metallic black. मैट फिनिश की वजह से ब्लू केस पे फिंगरप्रिंट्स नेग्लिजिबल दिखाई देते हैं. The LED up front glows to show status and there is Type-C charging on the back. Headsets plastic and glossy हैं and do offer touch and slide controls for volume adjustment. The earbuds they're light and एक बार आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंगली टिप्स चेंज कर लें, the stick and stay is pretty good. Plus the support for LHDC higher codec means आप 2496 फाइल स्ट्रीम करके सुन सकते हैं. So they get wide, they get loud without getting uncomfortably distorted and they do handle bass pretty well. And for people जिनको high and heavy earbuds पसंद नहीं है, वो connected phone audio settings में जाके EQ modes modify कर सकते हैं with support for Hey Melody app as well. इन buds में active noise cancellation का भी फीचर है and moderately loud ambiences को ये easily cut कर देते हैं, जैसे AC hum, general office murmur and more. बहुत loud environments में they work but with a little struggle. Transparency mode काफी अच्छा है. In fact, जब आप एक earbud उतारते हैं तो transparency mode का दूसरे वाले earbud में automatically switch on हो जाना is pretty swift. ये transparency and noise cancellation दोनों phone calls में भी अच्छे से काम करती हैं. OnePlus की claimed battery life 44 hours है. So 2 working days ये easily चल जाता है. And being IP55 dust and water resistance rated, case को तो नहीं but buds को आप light rain and workout sweat में भी use कर सकते हैं. ChatGPT, Copilot and Google's Gemini have made our lives a lot easier by helping us get detailed answers to questions without having to browse through multiple search results. However, generative AI tools can be used by students to complete their homework or submit assignments without any effort. Technical Guruji explains how teachers or employers can use AI detection services that are available to check if content has been generated using artificial intelligence. Take a look. So friends, in today's fast growing field of tech, हम शायद कहीं ना कहीं हमारी creativity को थोड़ा सा sideline कर देते हैं and we just do a quick Google to arrange for all our assignments या जो भी हमको कभी submit करना था, you know, GPTs and all, and it's getting very popular. Now this tip is for all the teachers. मैं आपकी मदद करने वाला हूँ because आप भी देखते होंगे at times students just submit all their assignments, all the homeworks done by ChatGPT. अब आपको अगर पता लगाना है that if it is created by using AI, there are different websites and tools available for you. There are tools like GPT-0, it's like Quillbot, या अगर आप Google करेंगे तो आपको और भी ऐसे काफी resources मिल जाएंगे जहां पे if you just paste that assignment जो आपको मिला है, किसी स्टूडेंट ने अगर सबमिट किया है बड़े ही स्टाइल से, with just one click, these tools can tell you that if it is generated using AI or not. Now some of them are free, some of them are paid, but then there are many premium वाले कुछ options हैं जहाँ पे आप एक trial इनका ले सकते हैं, and it clearly shows that no matter the kind of AI we have, no matter how advanced the ChatGPT gets, जो human creativity है वो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत unique बनाती है, और उसको पता लगा पाना कि ये ह्यूमन जनरेटेड है या एआई जनरेटेड, इट्स पॉसिबल एंड देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स गिविंग यू राइट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज असाइनमेंट्स. सो टीचर्स, आपके लिए मैंने आपको एक टिप दे दिया है, एंड फॉर स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट टू डू नाउ. Uttar Pradesh is setting the trend with its rapid infrastructural development. Here is Gorakhpur's growth story. उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण उभरता हुआ शहर है गोरखपुर. लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का केंद्र है गोरखपुर. गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि भी है. गोरखपुर एक नई पहचान के साथ आज देश के फलक पर चमक रहा है. नमस्कार, मैं अनामिका जैनम्बर स्वागत करती हूँ आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरा उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश. किसी भी शहर के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत योगदान होता है. सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क इस बात को निर्धारित करते हैं कि विकास कैसा होगा. योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प था, जिसके कारण आज पूरा गोरखपुर 4 लेन से कवर हो चुका है. गोरखपुर से जोड़ने वाले शहर महाराजगंज, देवरिया,
बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर, ये सब 4 लेन से जुड़ चुके हैं। गांवों तक 2 लेन की सड़क जाती है। लिंक रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ा जा रहा है। 50 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे शहर में हर चौराहे पर लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी। मेन रोड्स जो मेन कनेक्टेड रोड्स हैं वहाँ पे आपको न ट्रैफिक मिलता है, न वाटर लॉगिंग मिलती है, इजी हो गया। प्लस आपके जो ये इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह अपग्रेड कर दिए गए हैं, प्लस ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ जो डाल दी गई हैं, जो अंडरलाइन वायर्स होती हैं, उनको ऐसे सारे यंगस्टर्स को हमें भी बहुत ईजी हो जाता है। सड़कें शानदार हैं तो रेलवे स्टेशन कैसे पीछे रह जाते। हाल ही में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों की सौगात गोरखपुर को मिली है। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास के लिए योगी सरकार ने 693 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अयोध्या धाम की तर्ज पर गोरखपुर जंक्शन में भी आपको परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। गोरखपुर के पास अब अपना खुद का हवाई अड्डा है। 2016 तक यहाँ केवल 1 फ्लाइट आती थी, लेकिन आज हर दिन यहाँ से 14 उड़ानें भरी जाती हैं। यहाँ से हर दिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में उड़ानें भरी जाती हैं। थोड़े दिनों में यहाँ एक नया टर्मिनल भी बन रहा है यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर, और साथ ही यहाँ पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वेटिंग रूम और कैंटीन भी होगा। 2017 के पहले 1 फ्लाइट कभी कभी आती थी, साल में 6 महीने चल पाती थी, और आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं। देश के हर प्रमुख नगर के लिए गोरखपुर से फ्लाइट है। कनेक्टिविटी होगी तो उद्योग धंधे भी होंगे। गोरखपुर में शहर के पास 8600 करोड़ रुपए की लागत से फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर पिपराइच में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री पर नए प्लांट लगाए गए हैं, जहां सल्फरलेस शुगर बनाई जाती है। गोरखपुर के विकास को सुनियोजित करने के लिए गीड़ा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी योजनाएं तैयार की हैं। यहाँ डेयरी उद्योग है, यहाँ कल कारखाने हैं, यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स को केंद्र बनाया जा रहा है। पूरे जिले में 50,000 करोड़ रुपए के उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले गोरखपुर के लोग माफियाओं से त्रस्त थे, लेकिन आज माफिया बुलडोजर और पुलिस से डरते हुए दिखाई देते हैं। कारण योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा व्यवस्था। आज हर व्यक्ति बेखौफ होकर के अपनी जिंदगी जी रहा है। अभी हाल ही में गोरखपुर में 40 और नई चौकियां बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दिखा दी है। इन तमाम बड़ी योजनाओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जिले के लोगों के लिए, और वो तोहफा है चिड़ियाघर। ये 121 एकड़ में फैला हुआ चिड़ियाघर है, जो कि लखनऊ और कानपुर के बाद बनने वाला प्रदेश का एकमात्र और चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में 58 प्रजातियों के करीब 400 जंगली जानवर हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति से इंसानों को जोड़ने का काम किया गया है। हमारी संवेदनाओं को हमसे रूबरू कराने का काम किया जा रहा है। दौड़ती हुई सड़कें हैं, डेयरी है, गारमेंट्स है, फैशन है, खुला आसमान है, जहाज है, जोड़ता हुआ जंक्शन है, प्रकृति से संवाद है, संवाद में इमोशन है। यहाँ तरक्की और संवेदना का अनूठा कनेक्शन है।
कुछ मैं The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. "10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones." और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहाँ पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। मान्यवर, हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं। जाने कब से रहते हैं, रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे
रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, ओडिया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण, और शंकरदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तावित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बचा। उरांव में, बोडो में, संथाल में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। मान्यवर, ये जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है, ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली। मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, ये स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर, राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। गिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मान्यवर, ये राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का, ये सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के। मान्यवर, 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी, उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश की चेतना की पुनर्जागृति का आंदोलन है। इसलिए
हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर, कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब? जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो। अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है, और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। किस चीज का आक्रोश? हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से बनना। कुछ लोगों ने यहाँ पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? मान्यवर, निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर, जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। मान्यवर, एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर, 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट के सामने गया, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला, और अंततोगत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया, तब 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है, वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की, और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर
राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा आंदोलन मान्यवर जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं मान्यवर कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब और जब जजमेंट आया तब कई लोग आगाज लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे इस देश में रक्तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में धर्म के बीच में बड़े विवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने किया। और उसके बाद जब समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया मान्यवर, उनको न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करें। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं। न्यास ने उनको नेतृत्व करने का, जनता का प्रतिनिधि के नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए। मान्यवर, वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मान्यवर, हम सब ने आचार्य गोविंद देव गिरि जी ने जो वक्तव्य दिया वो सुना है। मोदी जी को जब मौका मिला तब उन्होंने रामानंदी समाज के, संप्रदाय के और वैष्णव संतों से पूछा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा करनी है, किसी संसारी ने करनी है, तो इसके यम नियम, इसके लिए किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, और जो संतों की ओर से सुझाएगा उससे भी अनेक गुना कठोर 11 दिन का व्रत इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, 11 दिन तक सैया पर नहीं सोना, 11 दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय, राम भक्ति में रचे बसे रहना और पूरे जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। मान्यवर, ये 11 दिन में मां सबरी, गिलेरी, वानर, भालू, जटायु, ये सब के साथ जुड़े हुए देश भर में जो राम के स्थान थे वहां जाकर राम के काज के लिए गिलेरी जैसा भी योगदान देने वालों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम इस प्रधानमंत्री। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का समय आया, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया। मान्यवर, इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर, इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर, मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया,
ये सब भक्ति आंदोलन ने समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बढ़ाने का। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। भारत के ही छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस प्रकार के त्याग की भी इस देश की परंपरा रही, परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक ने, एक जनता के व्यक्ति ने, एक जनता के प्रतिनिधि ने अपने यम, नियम, तप और उपासना से भक्ति चेतना की जागृति की, तो इसका एकमात्र घटना नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूं। मैं उस दिन बैठा था लक्ष्मी नारायण मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर में, जो जनता थी, जो लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा देश राममय हो गया था और जय श्री राम के नारे लगा रहा। मान्यवर मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के, पराजय के कोई भाव के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था, पूरी दुनिया जानती है। जब संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। संघर्ष से भक्ति की ये यात्रा पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा है। मान्यवर, इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो। भारत की और हम सब की भलाई है। मान्यवर, ये बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, जिसने संन्यास्त नहीं लिया है, जो सन्यासी नहीं है, जो किसी पंथ संप्रदाय का उपदेशक नहीं है, ऐसा व्यक्ति और जो देश का शासक है, प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना, भक्ति की चेतना खड़े है। ये दुनिया में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं नहीं मिलेगी। मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े होकर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी मेरे नेता है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के प्रमुख नेता है। मान्यवर, मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने अनेक समय पर नेतृत्व के गुण क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया। अच्छे समय में भी किस प्रकार से संयम रखना चाहिए इसका एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और हर समय पर निर्भयता के साथ संवेदनशील, सजग और जन भावनाओं को समर्पित नेतृत्व कैसा होता है इसका उदाहरण दिया। इनके 10 साल के कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के पड़ाव आए हैं। मानिए, ये भी राम जन्मभूमि के आंदोलन जैसे ही पड़ाव रहे, क्योंकि जो गड्ढा ये खोद कर गए थे, वो गड्ढे को भरकर उसमें महान भारत की इमारत बनाना ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम यात्रा नहीं है। मान्यवर, सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी, जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट थी, सैकड़ों पॉलिसियां बनकर आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को ले जाकर एक नीति के आधार पर चलने वाला राज्य, नीति के बनाने वाले नेता कैसा होता है उसका उदाहरण दिया। कोविड आया तो भयभीत हुए बगैर सरकार की मशीनरी कम पड़ जाएगी। जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़ेगा इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। वो जानते हुए एक मोर्चे पर वैक्सीन का इनोवेशन का काम चालू रहा, दूसरे मोर्चे पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन का काम चालू रहा, तीसरे मोर्चे पर हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाने का काम चालू रहा, चौथे मोर्चे पर
जो कोविड की दर्दियों की शुश्रूषा कर रहे थे उनका नेतृत्व करने का काम चालू रहा। और 5वें मौके पर जनता कर्फ्यू, दिया जलाना, थाली बजाना, हंसने वाले आज रोड पर घूमते हो गए, उनको मालूम नहीं है पूरी दुनिया मोदी जी के संवेदनशील और समग्रता से भरे हुए नेतृत्व को आज स्वीकार। मान्यवर, यही समय में कोविड का पड़कार भी आया। यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुंह दिखाना शुरू किया। दृढ़ता के साथ नेतृत्व छाती सीना तान कर खड़ा रहा। हिंदुस्तान की एक इंच जमीन नहीं। कई बार हुआ था इसी समय में पुंछ और पुलवामा में हमला हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीरता का भी परिचय दिया और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। हजारों बच्चों जब परीक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे, ट्रेस में आते थे, मनोरोग के शिकार बनने थे, एक पिता की तरह एक प्रजावात्सल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रजा परीक्षा पे चर्चा की भी बात। और जब मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। 70 साल तक, 68 साल तक देश ऐसे नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा। 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वगुण संपन्न नेता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर में रामलला की बाल प्रतिमा, मनोहरी दृश्य, आंख बंद कर देते तो सामने वो प्रतिमा दिखाई पड़ती। इतनी मनोहरी प्रतिमा बनाने का काम हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। मान्यवर, एक प्रकार से समग्र भारतीय संस्कृति को मोदी जी के माध्यम से एक अभिव्यक्ति का काम है। मान्यवर, राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण। बचपन में ही शिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए विश्वामित्र के वहां रावणों का वध किया, अहल्या को सम्मान दिया, मां सबरी को गले लगाकर इस देश के गिरिजन और पिछड़े लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं का सम्मान किया और गिलहरी, गिद्ध, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने फहराया। और मोदी जी ने जब ये अयोध्या बन रही है, ढेरों लोगों ने, मैं आज सबके बीच में कहने से मेरी अपने आप को रोक नहीं सकता, ढेरों लोगों के प्रस्ताव थे कि अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्री राम का नाम दिया जाए। बड़ा लोक लुभावन प्रस्ताव, परंतु मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि का नाम देना। सारे मौकों पर दशरथ का, सीता माता का चौराहे पर नाम देने का प्रस्ताव आया था। मोदी जी ने कहीं जटायु को रखा, कहीं गिलहरी को रखा, कहीं हनुमान को रखा। मान्यवर, समग्र समाज साथ में लेने का काम किया। मान्यवर, ये जो मंदिर बना है उसके निर्माण में भी पूरे समाज को साथ में रखने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि इसमें देश के हर हिस्से को स्थान देने का काम मंदिर के निर्माताओं ने किया है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से कुछ नहीं आया है। हर प्रदेश और आसपास के सभी देशों से राम काज के लिए कुछ न कुछ समर्पित हुआ है। सबकी भूमिका पूरे समाज को जोड़कर मान्यवर ये मंदिर बना है। ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। मान्यवर, भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत
और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। मैं जरूर मानता हूं कि सालों से सदियों से इस देश के प्रेरणा पुरुष रहे, जिनके चरित्र से न केवल इस देश पूरी दुनिया संदेश लेती है, ऐसे प्रभु श्री राम को मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का प्रयास करेगी। मान्यवर, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमांडोज इनसे अब हम मिलेंगे वो गरुड़ कमांडोज हैं, तो इनके जो कमांडोज हैं वो भी ये बहुत ही स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हम मिलने चल रहे हैं उन गरुड़ कमांडोज से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी क्या खास ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में कुछ बताएं हमें। कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। इनका ट्रेनिंग जीआरटीसी से स्टार्ट होती है और फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चारों तरफ ट्रेनिंग होती है। क्या खास रोल होता है गरुड़ कमांडोज का? गरुड़ कमांडो का कोई भी मिशन मिले, हाँ, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही होता है गरुड़ कमांडो। हमने अब जाना कुछ कि ये गरुड़ कमांडोज जो हैं वो क्या होते हैं, पर अभी हमें ये कुछ स्पेशल एयरबोर्न अपनी ये ट्रिक्स और वो भी दिखाएंगे, कुछ कमाल दिखाएंगे, कारनामे, जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि क्या होगा। तो हम थोड़ी देर में वो भी विटनेस करेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग मिशन पे जा रहे हैं अपना। हमारा मिशन होगा, यहाँ से हमारा आईजेड है अराउंड 5 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लेन होंगे, वहाँ पे स्लीदर डाउन करना है हमको इंसर्जन जोन में। बेसिकली पर्पस ऑफ स्लीदरिंग इज़ कि हम कई जगह करते हैं। वॉर टाइम में दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज या ट्रूप्स को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। पीस टाइम में HADR, प्राकृतिक आपदा कोई आती है तो अगर ट्रूप्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो तो उनको इंसर्ट करने के लिए करते हैं। आज ट्रेनिंग मिशन है तो पहला अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हमारे ऊपर है। कोई हम मिशन पर नहीं जा रहे हैं आज, तो अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखिए, ध्यान में रखिए। पहुंच गई है वो जो कमांडोज गए थे, गरुड़ कमांडोज, वो पहुंच गए हैं यहाँ पे और हम देखेंगे अब वो वहाँ से उतरते कैसे हैं। स्लिदरिंग एक्टिविटी है जो अभी हम देखेंगे। तो दे स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज and they're the first responders in every situation, everywhere. They are the specially trained forces. स्पेशल केयर होते हैं इनके और फास्ट ट्रेनिंग। A lot is dependent on them. A lot. Most. It's they're the protectors. Yeah, and quick response. Good. You know. अनिल जी, हमने अभी वहां देखा था पीछे उन कमांडोज को, गरुड़ कमांडोज को, और किस तरह से वो स्लिदर करके नीचे उतरे। ये अब हम उस एरिया में आ गए हैं जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में कई तरह की चीजें हैं, इक्विपमेंट भी है, वेपन्स भी हैं। आइए चल के देखते हैं। फिर हम देखेंगे ये भी कि पीछे इनकी जो ट्रेनिंग होती है, कुछ शायद आज हमें दिखाएंगे भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग जो है। ये क्या है? ये गरुड़ स्पेशल फोर्स द्वारा यूज किया जाने वाला एरिया वेपन है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 है। एंटी टैंक, मतलब एंटी टैंक को बर्बाद करने के लिए, और एक पर्सनल ग्रुप है 15-20 टेररिस्ट ग्रुप, उसको बर्बाद करने के लिए, और कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्मोक लेयर करने के लिए, कोई कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए, उसके लिए, और लाइटनिंग के लिए। नाइट के दौरान ऑप्स में कोई एरिया को सर्च करना, पर्टिकुलर एरिया को, तो 500 मीटर एरिया के अंदर ये लाइटनिंग करते हैं। फिल्मों में तो काफी देखा है हम लोगों ने, इस्तेमाल भी होता है। आप
फील महसूस करना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे? Permission. Yes. Permission है? Of course. Different people believe in different things. In cricket, some hail the king, some believe in God. Some wait for Mr. Right, some believe in swiping right. Some run away from risk, others run after it. Some make a career in a company, some make a career out of building companies. But when it comes to money, everybody believes in only one thing: profit, profit, profit. And for profit, watch only NDTV Profit. We all love money. ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਐਸਐਫ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਹੀਲਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇੰਪੈਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਹਰ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਐਸਐਫ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 50% ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜੀ। 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। This is NDTV. And you're watching NDTV 24/7. What a start to the new year. We have started with the Grammy Awards and India is shining, and how? Not one, not two, but 3 Grammys have come home, and I am here with Rakesh Chaurasia, who has won two Grammys. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Okay, let's start with this. So when, as a child, you have watched and performed, and then went to collaborate with Zakir Hussain, and then went to win not 1, 2 Grammys. This journey, when you look back now, how does it feel? Well, if I look back, when I used to accompany Babuji, Chaurasia on stage, so, and when Zakir Bhai used to perform, they used to perform together, and amazingly, it was. And at their peak, and enthralling all the audience, looking into their eyes, and being a kid, I used to just admire both of them. And especially I used to sit on the left, then Babuji, and then Zakir Bhai is facing towards me. And I used to always watch him, admire him, and always used to think one thing, that when I will get a chance to play with him. And it was a dream. I never thought that it will be fulfilled in my one life, because playing with him, being at that platform, it was amazing. And God is kind. I got a chance to play, and blessings. I can say that it was a blessing, not a chance. And the way he supported the first time when I performed with him, I played the whole concert with my eyes shut, because couldn't face him. Means I've seen him. This is so much of generation gap, Being a kid watching him, he was already a star. So that was the moment, and then I got a chance, and slowly collaboration and all that, and today is the time to celebrate. अच्छा, हमें ये बताइए, जब नॉमिनेशन आया, ग्रैमी नॉमिनेशन आया, वो रिएक्शन क्या था? क्योंकि
नॉमिनेशन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? Correct. So we were touring in America, all four of us, and generally we travel. हम लोग बस में travel करते हैं पूरा America, because the way we 18 concert in 20 days, so it's not possible to fly because instruments कभी नहीं आएंगे तो concert नहीं हो पाएगा शाम को, and that is quite usual thing in US. So they always tour in a bus. That's why the tour has been designed a year before. And number of restitutions, amount that is restituted, which is taken away from the wrongdoer and given to banks or institutions like that, during the time was nil. They did not restitute even 1 rupee from the wrongdoer to the bank or to anybody else, whereas actual restitution during our period is 16,333.02 crores they've come back to the bank. Similarly, red corner notice, extradition, none of that has been done during their time. Everything is nil, 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 nil. Whereas what we have done is to issue red corner notice on 24 people, and orders have already been passed to extradite Vijay Mallya, Nirav Modi and Sanjay Bhandari, all of whom benefited through loans during their period. Their period they gave loans, and these people ran away from the country. They did not take any action, and when we came to power, we had to send notice, fight in the case, and the orders for extraditing them has already been issued. So K.C. Venugopalji had, I can't see him here, but I'll still respond, said, tell me one scheme that you have brought compared to our, RTE, RTI, and NFSA. Sir, I want to just give him one. More also. I want to highlight the fact, sir. I was immensely grateful to our member from Uttar Pradesh. I'm immensely grateful to our member from Uttar Pradesh, Brajlalji. He spoke, sir, to tell you what exactly is the mindset. He is a policeman. Who is he? He is a former DGP. Oh, I better be careful then. But still, he spoke total truth. I'm not... No, what I meant was DGPs have expertise on account of their training to know the mindset. Sir, he actually nailed the point so effectively. If we start looking at governance only from the point of view of entitlement and not empowerment, you can always quote saying right to food, right to education. It's all right. You did it very well. I appreciate that. But how many who have bought? Again, tell me in the name of right to something, right to something. Brajlalji actually highlighted where that empowerment should have happened, and it has happened under Modi. It has not happened earlier. What are they? For example, he recited from 1947 how a Dalit leader went to the then Pakistan, and then Pakistan, meaning the East and West Pakistan, was made law minister, came back and realized this whole farce of, Dalits don't get empowered can be dispelled, and to dispel it, you need a leader like Prime Minister Modi. 47 till today, that approach of empowering Dalits has not happened. Empowering tribals hadn't happened. I'm giving that example based on also what Brajlalji highlighted. Dalit, tribal, 5 of the sacred sites of Dr. Ambedkar have been bought and established and flourishing under Prime Minister Modi's time. They could contribute to Dr. B.R. Ambedkar only in one way,
They feared people who would overshadow the first family, whether it is Dr. B.R. Ambedkar or farmer leader Charan Singh ji or Shama Prasad Mukherjee ji. They make sure that such leaders, Karpuri Thakur ji, they make sure that leaders who they perceive as being a threat to the first family, they undermine. They make them lose in elections. They come to insignificance. And when somebody else gives them the recognition, gives them the due honor, we cannot digest it. That's the story, sir. I'm thankful to our member, Rajlal ji, to have brought that point back. Tribal leader today, a woman leader from Orissa, is occupying the highest position as President of India. And that is because Prime Minister Modi has given them. And Birsa Munda ji, who's Bhagwan for tribals, that day has been declared as a day for Samman of all the tribals. Why couldn't they do it during the time? No, they were believing only to keep them as vote banks. I'm giving you a few crumbs, you remain there, but give me vote. That's a story. Prime Minister Modi doesn't believe in that. He believes in empowering them, honoring them. And that is the similar treatment and recognition which was given to the Sahibzades, the two young children of the Guru who gave their lives to protect this country. So the approach is empower people, don't keep them under your thumb because you want their votes by throwing some few crumbs. No, that is the approach with which we've gone, and therefore asking us, tell me what that one signature project that you've got. We brought right to education, right to farmers and everything else. But even when doing that, the so-called Right to Food Act, even when doing that, they do one thing here. Internationally, they do things to undermine that thing here. If you're giving us right to food, how did you go to Bali in 2013 and give away the right for doing MSP-based procurement from farmers, keeping a buffer stock, releasing that through PDS? You gave it all away by signing. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. India is going through a massive churn in the way directors are going to, one, get appointed, two, get evaluated, and three, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value addition as they could be. So as a norm, I would say you really use the independent directors to benefit the company in its approach to creating value for all its stakeholders. India is going through multiple transitions. There is a disruption which hits India, the world, I should say, not just India, every 6 months, 9 months. Now, in that context, how do you keep your organization safe and also primed for the future? And I think that's where the role of independent directors is somebody who can independently, if I may call it so, continue to challenge the management and guide them. If a director is to be responsible for every single thing, I think it's asking too much. And there have been numerous instances. Could be aberrations where sometimes if a font on a packaging is not of the right size, there is a case on independent directors too. They don't participate in those sort of activities. So I'm sure the dust will settle down, but
The independent directors should not only be protected but feel protected. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. जब हम अपने एयरफोर्स और अपने जवानों के पास आते हैं, सेना के लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग किस्म का जोश होता है। और आपके लिए यहाँ पर तेजपुर पे आना, कुछ यादें वापस आ रही हैं? आप यहाँ पहले आए हुए हैं? देखिए, मैंने ऊपर वाला से चाहा था कि जब मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था तो मैं वापस आऊँ यहाँ। तो मैंने यही कहा था, चाहा कि जब आप लोगों ने मुझे कहा कि ये शो जय जवान जो मेरा फेवरेट शो है, कि मुझे ये it's my fortune or my honor and privilege to be on this show, तो मैंने कहा कि तेजपुर में करेंगे। So the life comes full circle, क्योंकि मैंने यूनिवर्स में भेजा था कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ आपके साथ और इस शो के लिए, आपके शो के लिए। So beautiful. Thank you so much and it's such an honor to have you. और आज पूरा दिन हमारे सामने है, हम देखेंगे कि यहाँ क्या-क्या हो रहा है। पूरी तैयारी जो होती है लड़ाकू विमान उड़ाने के पहले, उसको भी हम आज दिन भर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारे फाइटर क्राफ्ट्स को निकालने के पहले टो किया जाता है। सो दिस इज द टोइंग व्हीकल। हम यहाँ इसमें चलेंगे, देखेंगे किस तरह से सुखोई को टो किया जा रहा है। लेट्स गो। बहुत ही कमाल का और बहुत स्पेशल एहसास है कि हम इसमें बैठे हुए हैं और इसको इतने टनों भारी सुखोई जो सुखोई 30 MKI है, ये अपने हैंगर से निकल रहा है और ये टो किया जा रहा है उड़ान भरने के पहले। आप लोग तो यहाँ पर पिछले दिनों आए और आप लोगों ने शूटिंग की, तो आपको काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस मिला होगा कि किस तरह से हमारे फाइटर क्राफ्ट्स, बल्कि फिल्म जो है फाइटर, उसमें इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, समझने का, देखने का, कैसे हमारी एयरफोर्स और एयरमैन काम करते हैं। But even when doing that, the so-called Right to Food Act, even when doing that, they do one thing here. Internationally, they do things to undermine that thing here. If you're giving us right to food, how did you go to Bali in 2013
and give away the right for doing MSP-based procurement from farmers, keeping a buffer stock, releasing that through PDS. You gave it all away by signing the Bali Declaration in Indonesia in 2013. And here you're coming and telling us we've given right to food? From 2017, sir, if only that agreement and Bali Declaration were to be implemented, we wouldn't be able to procure 1 grain of rice from the farmers today. We wouldn't be able to have a ration shop today. We couldn't have given food grains from our buffer stock for the poor today. So one side you come and do a right to a food, on the other, in the international platform, you go and sell away India's right to protect its farmers and protect its poor. So this is the hypocrisy, and therefore, if you're going to ask me, what is the signature contribution? At least we have honestly made sure the poor get free food grains. They get houses, they get water in their houses, they get electricity, they get cooking gas. All this under Prime Minister Modi. So, sir, I don't want to further take more time. There are just one important issue on the not so glamorous side of reform. Because most of us look at a glamorous side. There are some work which have been done, which has resulted in good amount being saved. Otherwise, pilferages happened. And because of pilferages, the government was short of revenue. Now that we save it, we are able to do more projects for the poor. So we introduced, I did say that the expenditure reforms committee was formed, and as a result, the budget cycle also was changed. State governments, because we presented budget at the end of February, state governments which used to present their budget in the month of February would not have the details of the centre's budget details, and as a result, they were presenting budgets on the, because we were presenting our budget in the end of February, they were just presenting something and trying to readjust. That got corrected because budgets were started being presented on 1st February. States now are able to get an idea of what is coming to them and plan for themselves. That is one. Second, plan, non-plan expenditure. By keeping that difference, you're constantly playing with discretionary allotments, which is what the Planning Commission earlier did with all the state governments. Such distinction is not even appropriate, as non-plan expenditures include maintenance of defense systems, social security, and pensions and insurance and so on, even the subsidy for poor. So we have shifted the focus to holistic allocation with bifurcation on revenue and capital expenditure. So these changes have resulted in states feeling a lot more empowered to plan their budget. Also, sir, Treasury single account. That's a system that we brought in, which influences how money goes to states for their schemes just in time. As resources are borrowed to finance the government's developmental agenda, the just-in-time release helps in saving interest costs and fostering transparency. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. 10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day.
बनेगा स्वस्थ इंडिया. One World Hygiene. Welcome to the news. No time to read the morning newspaper or follow TV bulletins all day? No problem. That's where we step in. Tune into the news with NDTV, a brand new podcast that brings you the day's 5 biggest stories in just 10 minutes. Added bonus, a piece of good news you can look forward to every evening. So sit back, relax and catch up the news with NDTV. Starting 12th of February, Monday to Friday, 6:30 every evening. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. When there's too much talking but very little being said, too many voices but hardly any being heard, you turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर और उनसे इस वक्त बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की। अनिल जी, आपको बस जल्दी जल्दी हाँ ना में बताना पड़ेगा। खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? नमकीन। योगा या जिम? जिम और योगा, सॉरी, बोथ। वेट्स या फ्री हैंड? वेट्स। मोस्ट कंफर्टेबल विद विच एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एनी फेवरेट डायरेक्टर्स? डैनी बॉयल, शेखर कपूर, quite a few of them. हर्षवर्धन आपकी सुनते हैं या अपनी मम्मी की? किसी की नहीं सुनते। सोनम आपसे ज्यादा क्लोज है या मम्मी से? मम्मी से। घर में किसकी ज्यादा चलती है? मम्मी की। मम्मी की, आपकी मम्मी की? मम्मी मतलब सुनीता, सोनम की मम्मी और हर्ष की मम्मी और रिया की मम्मी। What's fitness for you? Way of life. What's your favorite sport? Badminton at the moment. Who's a better actor, Sonam or Harshvardhan? Both. Better actor. Both are great actors, good actors. They have to work hard and become better. What do you prefer now? आपको क्या ज़्यादा पसंद है? Long format या फिर फिल्में? Both, I think. You know, it's very because I think I've done both, and I have enjoyed doing both of them. You know, I did a long format, I did 24, and I did Night Manager, and of course, फिल्में तो मैं बचपन से कर रहा हूँ. Any all-time favorite film? Mr. India, yeah, it's my all-time favorite film. Yeah, it's a lovely film, wonderful film. I revisited it again when I did one of the ads, and there's something very, something which really it's stood the test of time. Yeah. You know, like your preferred genre for film, comedy or action? Comedy, because comedy is something which you either you can do it or you have it. Or you don't have it. Their lighting, director, music, background music that cannot help you. You have to do it yourself. You know, with action and with dramatic scenes, and with anger and violence, sex. There's a lot of things which can really help you in that. You know, जबरदस्त background music चलेगा, ऐसा लगता है बहुत जबरदस्त काम हो रहा है. Comedy में सब चलेगा नहीं. और ये खुद कर रहा हूँ. Social media पसंद है आपको? Are you on Instagram? Yes. What is Gen Z for you? Gen Z for me is, I think, Gen Z is the mind, you know. For me, anybody who has a young mind, for me is Gen Z, yeah. You would call yourself a Gen Z? Absolutely. Great. Salam UAE, the Ultimate Reality Awards is here to recognize the contribution of real estate companies and property developers in building the UAE. It's a small step to honor their journey and success stories in building the property landscape in UAE. It's indeed our pleasure to meet you at the Ultimate Realty Awards in Dubai. See you on the 17th February.
हमारे साथ हैं मशहूर एक्टर अनिल कपूर और उनसे इस वक्त बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की। अनिल जी, आपको बस जल्दी जल्दी हाँ ना में बताना पड़ेगा। खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? नमकीन। योगा या जिम? जिम और योगा, सॉरी बोथ। वेट्स या फ्री हैंड? वेट्स। मोस्ट कंफर्टेबल विद विच एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एनी फेवरेट डायरेक्टर्स? Hello friends, welcome back to another fresh episode of your favorite show about technology and you know the name, it's very simple. अब तक तो आपको आदत लग चुकी होगी, it is Tech with TG और हर शो में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो क्वेश्चन might come कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी ने ऐसा क्या बना के दिया है हमें जो आज हम सभी की लाइफ्स को बहुत ही बड़े स्केल पे इम्पैक्ट कर रहा है। Now, I mean, this is a very wide open question and the responses could be very different अगर आप अलग-अलग लोगों से पूछते हैं। Someone recovering in hospital might say healthcare. Someone playing games with a PlayStation at home might say internet. मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा स्मार्टफोन। But अगर हम एक backbone की बात करते हैं तो I believe transportation, I mean, if not the greatest, still has lots of significance। और अगर हम किसी भी फील्ड की बात कर लें, तो चाहे वो स्पेस हो या हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर हो या फिर एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ स्मॉलर स्केल, वी मस्ट टॉक अबाउट द अर्बन मोबिलिटी। मतलब आज की डेट में आपके फोन में ओला है या उबर, रैपिडो है या इनड्राइव, the way we are able to transport from point A to point B on demand बड़े आराम से सीधा हमारे स्मार्टफोन पे एक टैप करते ही जब हमें एक राइड मिल जाती है, it clearly shows the kind of tech that is going behind the scenes to make sure कि हम आज हमारे लाइफस्टाइल में इन सब चीजों को बड़े आराम से ऐसे यूज कर पा रहे हैं। So in this episode, I'm gonna go behind the scenes and I'm gonna tell you that what exactly is happening जब आप एक राइड रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे आपके पास एक गाड़ी आ जाती है और आप बड़े आराम से एक अमाउंट देने के बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच पाते हैं एट योर कंफर्ट। लेट्स गो एंड सी क्या होता है इस ओला उबर की दुनिया में और कैसे हम इन सभी चीजों को एंजॉय कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी, यू आर वाचिंग टेक विद टीजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि हाउ एग्जैक्टली द फूड डिलीवरी एप्स वर्क, और बड़े आराम से आपके किचन में कुछ सामान हो या ना हो, आप एक टैप पे आपका फेवरेट छोले भटूरे या जो भी आपको खाना है उसको एंजॉय कर सकते हैं बड़े आराम से। इन द सेम वे दीज एप्स फॉर मोबिलिटी, मतलब आपके घर में गाड़ी हो या ना हो या गाड़ी में टायर पंचर हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है। विद वन टैप यू कैन क्लियरली गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और ये कहीं ना कहीं एक सिमिलर सेटअप है जहां पे तीन अलग अलग साइड्स की कहानियां हैं। एक कहानी है हमारे साइड की, बिकॉज वी यूज दिस ऐप ऑन आवर एंड। The second story is for the people who are driving these cars. उनके साइड पे भी एक ऐप है and they have a certain interface. And the third side of story is about that entire platform कि Uber के बैकएंड में क्या हो रहा है या Ola के बैकएंड में क्या हो रहा है। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं। So first, let's start with the side that I mean, you and me, we both use to enjoy all these rides कि आखिर हमारे साइड में how things work. Let's first understand the difference between on-demand ride-hailing and calling हमारे जान पहचान वाले टैक्सी वाले भैया। पहला ऑफ कोर्स है कन्वीनियंस एंड सरप्राइजिंगली इस डिपार्टमेंट में लोकल टैक्सीज जीत जाती हैं इफ एंड ओनली इफ वो इतनी लोकल हैं और आपकी उनसे उस लेवल पे बातचीत है कि आपके एक कॉल पर वो हाजिर हो जाएं। वरना राइड हेलिंग एप्स की ऑपरेशनल लिमिटलेसनेस ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। ना आपको किसी को कॉल करना पड़ता है फॉर बुकिंग, ना उनसे उनकी अवेलेबिलिटी पता करने की जरूरत पड़ती है। सिंपली विद इन अ कपल ऑफ टैप्स आप राइड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम एंड टर्म्स पे शेड्यूल कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिकली पे भी कर सकते हैं विद इन अ सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट,
While ride hailing apps पे आपको फिक्स्ड प्राइस ऑफर नहीं हो पाता because pricing fluctuates depending on multiple factors. Pricing dynamically updates to reflect trip timings, traffic and distance, but आप इसे usually मीटर टैक्सी से ज़्यादा इकोनॉमिकल ही पाएंगे because आपको end-to-end राइड्स के लिए चार्ज किया जाता है, unlike मीटर टैक्सीज जो आपको दोनों साइड की ट्रिप्स के लिए चार्ज करेंगे. And we think लास्ट मेजर डिफरेंस है ओवरऑल यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस का. Ride hailing platforms all over uniformly same है in the areas they service of course. So आपका दिल्ली में राइड बुक करना आपका मुंबई में राइड बुक करने जैसा ही है. सेम फॉर आपका जापान, रशिया, लंदन, अमेरिका एंड युगांडा. सेफ्टी फीचर्स, प्रोफाइल बेस्ड बेनिफिट्स आपको सब यूनिफॉर्मली मिलते हैं. इनको यूज करने के लिए आपका इन एप्स के सर्विसेबल सिटी या लोकेशन में होना जरूरी है. इन एप्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको इन पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, पेमेंट मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे, ऐप को आपके डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये एप्स आपको आपकी राइड देने के लिए जीपीएस के थ्रू आपकी लोकेशन को ढूंढते हैं. आप ऑफ कोर्स मैन्युअली लैंडमार्क सर्च कर सकते हैं बट जीपीएस के थ्रू आप खुद को ऐप के इंटरफेस में ढूंढ सकते हैं ज्यादा इजीली. So here, these apps use a variety of techniques to triangulate your position, GPS being primary. And because आप अपनी प्रोफाइल पे certain locations को custom save कर सकते हैं, it means it keeps communicating with the platform server in the background to fetch your profile details and बाकी preferences. नेक्स्ट स्टेप होता है आपका अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन एंटर करना. इसके लिए भी ये एप्स मैपिंग एप्लीकेशंस जैसे कि गूगल मैप्स, मैप माई इंडिया एटसेट्रा के साथ पार्टनर करते हैं. जब आपकी डिजायर्ड लोकेशन आपको मिल जाती है एंड आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन आपको मिलते हैं राइड ऑप्शंस. डिफरेंट एप्स कॉल डिफरेंट टियर्स ऑफ राइड्स बाय डिफरेंट नेम्स एंड आप प्राइसिंग से फीचर्स एंड लग्जरी ऑन ऑफर को इजीली समझ सकते हैं. बाय बीइंग प्लग्ड इनटू मैपिंग का इकोसिस्टम, ये एप्स रियल टाइम ट्रैफिक डेटा यूज करके डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू रीच को एस्टिमेट करके आपको फेयर बताते हैं. ये बेस फेयर, टैक्सेस एंड अदर सरचार्जेस पे डिपेंड करता है. Once आपके एंड से बुकिंग ऑन हो जाती है, your demand is then floated in the platform's network of drivers around you. Rides are authenticated via an OTP जो सिर्फ उस ऐप इंस्टेंस में दिखता है जिससे बुकिंग हुई होती है एंड देन राइडर को उसे एंटर करना पड़ता है अपने ऐप में टू ऑथेंटिकेट द राइडर एंड द राइड. Now guys, this was about our side of things, but once we generate a demand कि मेरे को जाना है कनॉट प्लेस, तो जो ड्राइवर्स हैं उनके साइड में क्या होता है, what exactly is happening on their side of things, let's see and explore कि ये ऐप कैसे कनेक्ट करती है एक इंसान को जो एक यूजर होने वाला है सर्विस का with someone who is driving that car. Surprisingly, for many of us general users, इन ride-hailing platforms के दो sides होना न्यूज़ है. वो लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी व्हीकल्स ऐड करके एज राइडर पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं, उनका ऐप अलग होता है. उनके ऐप का इंटरफेस अलग होता है. उनके ऐप के फीचर्स भी अलग होते हैं. वो ऐप खोलने के बाद एक्टिव होना या इनएक्टिव होना चूज कर सकते हैं. जब ये एक्टिव होते हैं तब कॉन्स्टेंटली इनको राइड रिक्वेस्ट ऐप पर आती रहती हैं. ये हम यूजर्स हैं जो राइड के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं. एंड जब कोई राइडर हमारी लोकेशन के पास होता है, उनको हमारी रिक्वेस्ट फ्लैश होती है विद बेसिक डिटेल्स. पिकअप कहाँ से है, ड्रॉप कहाँ का है एंड ड्यूटी का फेयर कितना है. When the rider chooses to accept that ride, तब उनकी डिटेल्स हम राइडर्स के ऐप पे फ्लैश होती हैं. So this is demand and supply matching. This means in a central processing system somewhere, customers का GPS data and उनके vicinity में available सभी rides का data match हो रहा है. While the ride is going on, the rider is plugged into a real-time traffic and navigation system, जहाँ से riders को shortest and fastest route to the rider's destination दिख रहा है. And platform actual fare calculate कर रहा होता है, using track metrics like distance traveled, time being taken, etc. इसीलिए अगर आप इन राइड अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दें, पहले राइड एंड कर दें या कहीं ज्यादा आगे जाकर उतर जाएं, these rider partners they don't complain. The fare gets adjusted dynamically. This flexibility is one of the main utilitarian reasons why इस तरह के राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स फेमस हैं. हम यूजर्स की ही तरह राइडर पार्टनर्स की भी प्रोफाइलिंग होती है, where they are shown detailed metrics of the rides they've done, the money they've made, and just like social media platforms, they can log out to take breaks and pauses at their leisure.
Okay, so these are two sides of the triangle, but the third is, I think, एक और साइड जिससे ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होता है, वो है इस एप्लीकेशन की साइड की पूरी कहानी. बट आई एम गोना टेल यू दैट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, जहां पे हम इस पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाले हैं और जानने वाले हैं what exactly is happening when you're going from point A to point B using your favorite ride provider, जो भी हो सकता है वो. Let's see all of this after this very short break. Welcome to the news. No time to read the morning newspaper or follow TV bulletins all day? No problem. That's where we step in. Tune into the news with NDTV, a brand new podcast that brings you the day's 5 biggest stories in just 10 minutes. Added bonus, a piece of good news you can look forward to every evening. So sit back, relax and catch up the news with NDTV. Starting 12th of February, Monday to Friday, 6:30 every evening. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. How often have you turned away from debates that descend into endless fights? We bring you a show where every question is answered, where every debate finds its resolution, where every story finds its conclusion, where opinions collide but facts prevail, where stories unfold with insights and trust. When the noise ends, the last word begins. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Download the NDTV app today and get access to the best journalism and storytelling on your smartphone or tablet. The NDTV app. News that matters to you. India is going through a massive churn in the way directors are going to, 1, get appointed, 2, get evaluated, and 3, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value addition as they could be. So as a norm, I would say you really use the independent directors to benefit the company in its approach to creating value for all its stakeholders. India is going through multiple transitions. There is a disruption which hits India, the world, I should say, not just India, every 6 months, 9 months. Now, in that context, how do you keep your organization safe and also primed for the future? And I think that's where the role of independent directors is somebody who can independently, if I may call it so, continue to challenge the management and guide them. If a director is to be responsible for every single thing, I think it's asking too much. And there have been numerous instances. Could be aberrations where sometimes if a font on a packaging is not of the right size, there is a case on independent directors too. They don't participate in those sort of activities. So I'm sure the dust will settle down, but the independent directors should not only be protected, but feel protected. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space
to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit, can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Some people say the metaverse will only be virtual. One day this lecture hall will be made of code, and driverless cars would be trapped in intersections. But even in this maze of the future, you can't wish away health. It's time to become more resilient. "10 years of Banega Swasth India, we have grown and achieved so many milestones. And now I have a plan to beat the urgency, to stop breathing with difficulty, to relieve getting choked with inactivity. Energize our government, our environment, our society, and ourselves. Everyone, everywhere, every day. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG. My name is Gaurav aka Technical Guruji और आज हम बात कर रहे हैं अर्बन मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि that how exactly your Olas and Ubers function। और हमने ब्रेक से पहले जाना कि जो दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, जहां पे एक है हमारी साइड वी एज यूजर्स ऑफ द सर्विस, एक है जो ड्राइवर्स हैं उनकी साइड में आखिर क्या हो रहा है। बट नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द ट्रायंगल और हम पता लगाते हैं, विल टॉक टू समवन फ्रॉम उबर और हमें जानने को मिलेगा कि आखिर एप्लीकेशन साइड पे क्या होता है ताकि वो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए और हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाएं। Anywhere in the world, if anybody wants to move, we try to match a driver along with a rider, agree on a contract, and help them move from one place to another place. It's a very simple problem statement that Uber is trying to solve. And the rider can be completely varied in terms of his acumen to technology, and the same with the driver, right? And the other interesting part is Uber currently operates in 70 countries. Just our ride-sharing business is currently operating in 70 countries, more than 10,000 cities. Every hour, right? We do 1 million trips every hour globally, right? That itself is a huge number, right? And till now, we have completed close to 44 billion cumulative trips from the time we have started. We collect almost 1 billion events, in a day, right? To do a lot of analytics around how our app is getting used. So what actually happens behind the scene is very interesting, right? The moment you come and say, hey, I want to book a ride, we ask for a pickup location, and your current location can also be the pickup location, right? So once we know that, what we actually do is we actually go and look for all the potential drivers in and around your location, right? So और इससे पूर्व स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को और सरदेव लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के फैसले का हृदय से अभिनंदन करते हुए फैसलों का अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी
करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे, वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करोड़ रही मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि इसमें क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाई पार्टी नहीं, हम लोग तो सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था। सदन के अंदर, सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता। इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता है। लेकिन मैं महोदय धन्यवाद दूंगा उन सभी माननीय सदस्यों को इस पूरी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में भाग लेकर के इसको और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती हो, देर देर रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। सब ने इस बात को देखा है और सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ इन सभी 93 सदस्यों जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसे एक नई ऊंचाइयां दी हैं, मैं उन सब को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कमांडोज इनसे अब हम मिलेंगे वो गरुड़ कमांडोज हैं। तो इनके जो कमांडोज हैं वो भी ये बहुत ही स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हम मिलने चल रहे हैं उन गरुड़ कमांडोज से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी
क्या खास ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में कुछ बताएं हमें। कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। इनका ट्रेनिंग जीआरटीसी से स्टार्ट होती है और फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चारों तरफ ट्रेनिंग होती है। क्या खास रोल होता है गरुड़ कमांडोज का? गरुड़ कमांडो का कोई भी मिशन मिले, हाँ, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही होता है, गरुड़ कमांडो। हमने अब जाना कुछ कि ये गरुड़ कमांडोज जो है वो क्या होते हैं, पर अभी हमें ये कुछ स्पेशल एयरबॉर्न अपनी ये ट्रिक्स और वो भी दिखाएंगे, कुछ कमाल दिखाएंगे, कारनामे, जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि क्या होगा। तो हम थोड़ी देर में वो भी विटनेस करेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग मिशन पे जा रहे हैं अपना। हमारा मिशन होगा, यहाँ से हमारा आईजेड है अराउंड 5 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम। तो यहाँ से हम लोग इन प्लेन होंगे, वहाँ पे स्लीदर डाउन करना है हमको इंसर्जन जोन में। बेसिकली पर्पस ऑफ स्लीदरिंग इज़ कि हम कई जगह करते हैं। वॉर टाइम में दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज या ट्रूप्स को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। पीस टाइम में HADR, प्राकृतिक आपदा कोई आती है तो अगर ट्रूप्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो तो उनको इंसर्ट करने के लिए करते हैं। आज ट्रेनिंग मिशन है तो पहला अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हमारे ऊपर है। कोई हम मिशन पे नहीं जा रहे हैं आज, तो अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे, ध्यान में रखिए। जो कमांडोज गए थे, गरुड़ कमांडोज, वो पहुंच गए हैं यहाँ पे और हम देखेंगे अब वो वहाँ से उतरते कैसे हैं। स्लिदरिंग एक्टिविटी है जो अभी हम देखेंगे। तो दे आर स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज, and they're the first responders. First responders in every situation, everywhere. They are the specially trained forces. स्पेशल केयर होते हैं इनके और खास ट्रेनिंग। A lot is dependent on them. A lot. Most. It's. They're the protectors. Yeah, and quick response. Good. You know. अनिल जी, हमने अभी वहां देखा था पीछे उन कमांडोज को, गरुड़ कमांडोज को, और किस तरह से वो स्लिदर करके नीचे उतरे। ये अब हम उस एरिया में आ गए हैं जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में कई तरह की चीजें हैं, इक्विपमेंट भी है, वेपन्स भी हैं। आइए चल के देखते हैं, फिर हम देखेंगे ये भी कि पीछे इनकी जो ट्रेनिंग होती है, कुछ शायद आज हमें दिखाएंगे भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स जो है। ये क्या है? ये गरुड़ स्पेशल फोर्स द्वारा यूज किया जाने वाला एरिया वेपन है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 है। एंटी टैंक, मतलब एंटी टैंक को बर्बाद करने के लिए, और एक पर्सनल ग्रुप है 15-20 टेररिस्ट ग्रुप, उसको बर्बाद करने के लिए, और कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्मोक लेयर करने के लिए, कोई कॉन्टेक्ट ब्रेक करने के लिए, उसके लिए, और लाइटनिंग के लिए। नाइट के दौरान ऑप्स में कोई एरिया को सर्च करना, पर्टिकुलर एरिया को, तो 500 मीटर एरिया के अंदर ये लाइटनिंग करते हैं। फिल्मों में तो काफी देखा है हम लोगों ने, इस्तेमाल भी होता है। आप फील महसूस करना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे? परमिशन? यस, परमिशन है। ऑफ कोर्स। This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. India is going through a massive churn in the
way directors are going to, one, get appointed, two, get evaluated, and three, get a continuity of being on the boards that they serve on. Typically, if you look at it, you either look at it from a strategy aspect of it, you look at it from an HR aspect of it, or from a financial value. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Vedant Agarwal. Well, our big focus remains the heated debate in Parliament over the motion of thanks as far as Ram Mandir construction and the inauguration of the temple is concerned. Home Minister Amit Shah has also spoken in Parliament. We'll get to the latest on that. But first up, the headlines. Last day of the 17th Lok Sabha, a heated face-off over the Bharat Ratna in Parliament. Discussions on Ram Mandir and the White Paper. The Prime Minister to speak shortly in Parliament. Ram Rajya not specific to a particular community. Home Minister Amit Shah speaks in Parliament on the Ram Mandir motion of thanks. He says, in no country has a majority fought a legal battle for their rights. Assam mulls UCC implementation after Uttarakhand's announcement. A key Assam cabinet meet this evening. The aftermath of the Haldwani violence, 5 suspects arrested. A magisterial probe has been ordered into the violence. The probe report is to be submitted within 15 days. Turmoil and turbulence. Pakistan's election cliffhanger. No clear winner, but multiple victory speeches. Imran and Nawaz both claim victories. Reports suggest Nawaz Sharif to join hands with Bilawal Bhutto. The BCCI has announced a squad for the final 3 matches of India versus England Test series. Virat Kohli to miss the remaining matches. Our lead story this evening, well, it's the last day of the 17th Lok Sabha and it's a rather stormy day. The Lok Sabha began with a discussion on the Ram Mandir. It's a motion of thanks. BJP's Satyapal Singh spoke about the historic nature of the Pran Pratishtha ceremony, while the Congress emphasized secularism but said that the party distances itself from the Western interpretation of the concept. H.D. Devagowda, one of the country's senior-most leaders, also spoke about the Ram Mandir. He said that Mahatma Gandhi made Lord Ram a symbol of perseverance for the nation. But listen in to how this debate played out in Parliament. राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है. राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर. और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है. वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है. हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से. कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की. वो कानून की दुहाई देते हैं. मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? हम सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, जो शब्द है, इसमें जो पश्चिमी परिभाषा है सेक्युलरिज्म का, उस परिभाषा से हम अपने आप को भिन्न रखते हैं. अगर आप वो संविधान के डिबेट देखें, जब सेक्युलरिज्म शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जब संविधान में जोड़ा गया था, तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सांसदों ने यही कहा था कि हम पश्चिमी परिभाषा से हम परे रखते हैं. भारत एक धार्मिक देश है. भारत में बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, केवल एक ग्रंथ नहीं.
All right, Vasudha Venugopal is now joining us live from Parliament. So Vasudha, interesting there that on the last day of the 17th Lok Sabha, the Ram Mandir, which has been the BJP's long-standing agenda, is being discussed in Parliament. The Prime Minister also will be speaking on that, presumably. But the Congress also taking an extremely nuanced position as far as this is concerned, because, it has been in the dock, it has been criticized for not attending the Ram Mandir consecration ceremony. But Gaurav Gogoi, as I said, taking an extremely nuanced position, saying that we do believe in secularism but not the Western interpretation of it. Of course, Vedant, that's rightly said. Congress, as we know, has been walking the tightrope when it comes to the matter of Lord Ram. But clearly, today, Gaurav Gogoi did speak about this, and he said that, Congress does not ascribe to the Western idea of secularism. He didn't want to fall for the bait of right-wing parties that Congress has been supporting only hardliner Muslim organizations. But I think what Amit Shah spoke today, the Home Minister, is also very interesting, because remember, Amit Shah is yet to visit Ayodhya, the Ram temple there. He, in fact, spoke about the January 22nd Pran Pratishtha ceremony, and he said he was in a temple in Birla Mandir in Delhi, and he spoke about how the Ram temple represents the soul of the country, and those who don't understand what it means actually are still in the trap of colonialism. He said that Narendra Modi as a Prime Minister spent 11-day Anushtan, and that was basically following all the Yam Niyam processes, and that was in consultation with Ramanandi saints, and he made sure that there was complete understanding of the spiritual processes involved, and this was a start of a new bhakti movement. In fact, he quoted and cited the names of all the Ramayanas that are present in different parts of the country, including the south of India, and that, I think, was very it was a well-researched speech. But most importantly, he brought in judiciary and constitution again and again. He said that the opposition, which is opposing the idea of religiosity, does it disrespect the idea of constitution? Does it disrespect the verdict of the Supreme Court? And clearly asks this one question that does the opposition not understand that Supreme Court has given out this verdict in 2019, and the temple was built according to that, and nowhere in this world has a majority community fought such a long legal battle for something that is so core to its faith. Remember, he again and again said that 1858 was when the struggle for this Ram temple began, and there's been a consistent stand among Hindus that this is a matter of faith, and it does not actually it does not include fights between religious communities in India. Of course, Congress also responded to it. In fact, Gaurav Gogoi very beautifully talked about respect to all religions, and he said that India is a dharmic country, and underscoring the importance of religion in the common Indian's life. Of course, Narendra Modi is going to speak. The Prime Minister is going to speak at 5 p.m. today, but that is, in response to the motion of thanks. So it'll be interesting to see what happens. Today, of course, is the end of 17th Lok Sabha. Nirmala Sitharaman just a short while ago spoke in Rajya Sabha today, and she said Congress is known for creating, of ruining everything that has been well developed. She basically hit out at the Congress for ruining the economy in the 10 years of its power. But so clearly, lots of drama on the last day of the Parliament, and we're all waiting for the Prime Minister's speech now, which in some ways will mark the closure of this session. And Vasudha, it's the last day of the 17th Lok Sabha, and it has been quite a milestone Lok Sabha in that sense, because you have bills like the Women's Reservation Bill being passed in this Lok Sabha. You have the new criminal laws being sort of discussed and passed here in this Lok Sabha. Of course, this was the first time that the sessions happened in the new Parliament as well. So the 17th Lok Sabha will go down in history as one of the milestone Lok Sabhas, as I said. Of course, and this particular session, I think both opposition and the Treasury benches are very aware and cautious that this is the last session. So they, of course, use the platform to further their political points as well. So be it the announcement of Bharat Ratnas or the opposition making a point that it does not believe in the Western idea of secularism, I think that is very clear. But like you rightly said, in the last 5 years, we've seen remarkable bills being passed. We've seen farm bills being passed and then, of course, revoked. We've seen this whole change in criminal justice system. We have seen the controversial
Universal CEC bill getting passed. We've seen Data Protection and Telecom Act coming through, and just yesterday we saw this anti-cheating bill being passed. Also, that's also going to become a law. Jan Vishwas bill and also Anusandhan bill, which basically increases the expenditure of the government and research institutions. So from academia to criminal justice to farm laws to I think a whole lot of other sectors, and of course the most important thing, 33% reservation for women, which actually marked the start of the session in the new parliament. I think these are all landmark bills, and they'll all go down in history. But I think this last session was a lot about record keeping, from Ram Temple to the interim budget to the white paper. This I think the government really realized that this has to go on record, and I think that really that awareness marked the closing of this session as well. Absolutely, Vasudha. So both the opposition and particularly the government setting the record straight on many issues. Perhaps that will be sort of reiterated or reflected in the Prime Minister's speech as well. Thanks, Vasudha, for that. But moving now to interesting optics in Parliament. RLD chief also spoke in Parliament. In fact, Jayant Chaudhary spoke about the Bharat Ratna to his grandfather, Chaudhary Charan Singh. Also, interestingly, this comes right on the heels of the BJP and the RLD mulling an alliance. Take a look at what he had to say. हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। ऐसा क्या होगा कि चौधरी साहब अब बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आपके जो साथी हैं आपका विरोध करने लगे? मैं नहीं समझता क्या हुआ, और ये तो आप उनसे पूछिए क्यों इतने गर्म हुए, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है, उनको जांच तो करानी चाहिए, क्योंकि आज का ऐसा कोई विषय नहीं था और पक्ष और विपक्ष में हमें बंटना नहीं चाहिए था। ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है, खुशी की लहर है पूरे देश में। जमीनी लोगों को भारत रत्न मिला है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम सिर्फ कृषि वैज्ञानिक ही नहीं, देश का किसान भी जानता है। नरसिम्हा राव जी ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरुआत करके बड़ी तरक्की के रास्ते हम सब के लिए, आम लोगों के लिए खोले। चौधरी चरण सिंह जी देश के नायक रहे। अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जब मैं कह रहा था तो उन्हें खलल नहीं डालनी चाहिए। वो ये भी कह रहे थे कि किस तरह से आपको मौका दिया गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है बीजेपी के करीब आप जा रहे हो, उसको लेकर दरखास्त की थी चेयर से। कल मेरी दरखास्त दर्ज हुई थी और मैंने उनसे समय मांगा। क्या मैं उनका पोता हूं और मैं उनकी विचारधारा से भी जुड़ा हूं, क्या मुझे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में सदन में 2 मिनट बोलने को नहीं मिलेंगे? क्या कारण है कि वो नहीं चाहते कि मैं बोलूं? वो ये भी कह रहे हैं कि इसके एवज में जो है राष्ट्रीय लोक दल जो है चेयर का अधिकार क्षेत्र होता है, चेयर तय करेगा कौन कहां बैठेगा और कितना बोलेंगे। Meanwhile, the left parties decided to boycott the parliament. This comes amid a showdown between opposition-ruled states and the centre over what the opposition calls fiscal injustice. In fact, the left parties said that the centre is discriminating against Kerala as far as funds meant for the states are concerned. The CPIM said that we do not get finances we deserve, and in fact, they said that this is a united decision by the left parties. Take a look. लेफ्ट पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया। मेरे साथ 2 वरिष्ठ सांसद हैं लेफ्ट पार्टियों के, सीपीएम के जॉन बिटास और ए रहीम। बिटास साहब, क्या वजह है कि आपने आज वॉकआउट किया है? हम 2 कारण के ऊपर हमने बॉयकॉट किया है। ये कि केरल का खिलाफ तो डिस्क्रिमिनेशन है, फाइनेंस का हमको क्या चाहिए वो नहीं मिलता है, हमारा हक है हमसे हमारा मिलना है वो नहीं देते, इसका खिलाफ तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिलीजियस कम्युनल मुद्दा को वहाँ ला के ये पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, दैट्स व्हाई वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट। स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट, यस। सो ऑल लेफ्ट पार्टी एमपीज हैव बॉयकॉटेड? Yeah, yes, all left. This is a united decision by the left parties. We don't participate the divisive tactics of the government. We are not part of that. राज्यसभा डिबेट जो थी वो इकोनॉमी पे था। इतना बार तो हम इकोनॉमी को चर्चा हम तो पार्टिसिपेट किया है, मैंने बोल दिया वहाँ, उसके बारे में हमारा उसके बाद अरे कितना बार अयोध्या वहाँ डिस्कस किया है। ये मोशन ऑफ थैंक्स में कितना गंदा बीजेपी लोग तो बातचीत किया है उसके बारे में। ये मोशन ऑफ थैंक्स में कितना ये राष्ट्रपति जी ने भी बोला है अयोध्या के बारे में, इसके बजट में भी अयोध्या है, सभी जगह पे अयोध्या। कितना गंदे आप लोग बीजेपी लोग तो भाषण दिया है वहाँ। इसके अलावा दूसरा ये मोशन लाने के लिए क्या जरूरत था? So they are boycotted for the entire day? Yes, entire day, entire business. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
That fiscal injustice row playing out in Parliament. But moving now to the other big story we are tracking very closely on NDTV, the aftermath of the violence in Haldwani, where a high-level probe has been ordered and the report has been sought by a magistrate within 15 days. Remember, 5 people have been arrested so far, and a case has been registered and filed. Over 5,000 unidentified people, miscreants. In fact, remember, over 100 police personnel were injured and 2 people were killed in the violence over a demolition drive. In fact, Chief Minister Pushkar Singh Dhami also visited Haldwani and he met the injured personnel there in the Uttarakhand town as well. My colleague Ravi Ranjan Shukla is there in Haldwani and he sent us this report. मेरे साथ में हल्द्वानी नगर निगम के आयुक्त पंकज उपाध्याय जी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में बनफूलपुरा के अवैध निर्माण को गिराने के लिए टीम गई थी। अभी पंकज जी ने एक हम लोगों को ये प्रोवाइड करवाया है कि 2017 में गूगल मैप के ज़रिए उस जगह पर ये इतना खाली था, यहाँ पर कोई अवैध निर्माण नहीं था। लेकिन वही जब 2017 के बाद में जब ये 2023 आता है तो यहाँ पर आप देखिए कि कितनी जगह यहाँ पर कब्जा हो गई। क्या आप लोगों ने इस ज़मीन का अभी स्टेटस क्या है? रेलवे की ज़मीन है, नज़ूल की ज़मीन है, क्या आप लोगों ने नोटिस दिया था इनको? हमने नोटिस दिया था। हमने इनको पक्ष भी रखना चाहिए था। अपने दावे के संबंध में दावा भी कर सकते थे। इन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, कोई दावा नहीं रखा और नगर निगम के लेखों के अनुसार से और राजस्व लेखों के अनुसार ये स्पष्ट रूप से नजूल भूमि है। इसके थोड़े पास से ही रेलवे के दावे की ज़मीन भी शुरू होती है और नोटिस देने के बाद भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। हमने जो खाली ज़मीनें थी उसको कब्जा प्राप्त कर लिया था और जो स्ट्रक्चर था उसको भी ध्वस्त करते हुए कब्जा देने का हमने उनको नोटिस दिया था, उन्होंने अनुपालन नहीं किया। तो हमने जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग प्राप्त होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके हमने कब्जे लेने का काम किया। So, well, many questions still unanswered. Where was the negligence on the part of the local administration? That is a big question. With that, we'll take a short break, but news continues on the other side. The thrust of the budget was higher tax revenues and lower current spending on things like subsidies will give you enough space to increase capital expenditure on infrastructure and also fund some of the fiscal consolidation, bringing down the government's fiscal deficit. This is my forecast. I think in February, the inflation number announced would be 4.5% compared to 5.9% in the previous month. Growth is good, but more growth than you can handle is not good. For example, inflation can really go up. For example, your trade deficit can really go up. And that's why it's very important for the central bank to ensure that it loosens monetary policy but doesn't loosen too much. Stay informed and entertained with the new and updated NDTV News app. You can watch all our channels live, listen to podcasts, read breaking and exclusive news from around the world and more. Welcome back. Yet another setback for the India bloc. Arvind Kejriwal has declared that the Aam Aadmi Party will come out with candidates for all the 13 Lok Sabha seats of Punjab and the Chandigarh seat as well. And this comes just days after Chief Minister Bhagwant Mann had announced that the Aam Aadmi Party will go solo as far as the Lok Sabha polls are concerned. Mohammad Ghazali is now joining us live on the broadcast. So Ghazali, all right, so I'm being told that Ghazali is not with us. We'll try and reconnect with him. But of course, this comes as a big setback to the India bloc, given the fact that there was a public sort of war of words between Chief Minister Bhagwant Mann and senior Congress leaders of Punjab. In fact, Bhagwant Mann had said that it is almost a done deal that the Aam Aadmi Party will be fighting the Lok Sabha polls alone as far as Punjab is concerned. Mohammad Ghazali is now back with us. So Ghazali, this seemed like almost a foregone conclusion because Bhagwant Mann had made it clear that all 13 seats and the Chandigarh seat will be fought alone by the Aam Aadmi Party. Yeah, as far as Punjab is concerned, it was almost a unanimous call by both the parties that we should go solo. And yet again, Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann, they both have said that for Punjab, for all the 13 seats, they're going to announce a candidate. But what is more interesting is about Chandigarh.
in Chandigarh, Mr. Pawan Kumar Bansal, the former Congress MP, has also thrown his hat in the ring as far as Congress party is concerned. And he was the person who was the key contact person, or the person who was mediating or sort of in touch with the Aam Aadmi Party as far as the mayoral polls is concerned, where this India Alliance councillors got together. So what happens in Chandigarh as far as the mayoral polls was concerned, it appeared as if that was a precursor to 2024 elections. Perhaps that Aam Aadmi Party and Congress will have some seat sharing arrangement. That's only just one Lok Sabha seat. So perhaps it was being understood that as they have got an agreement, into an agreement for the mayoral polls, perhaps Aam Aadmi Party and Congress will consider the same for the Lok Sabha polls as well. But today, the picture has become clear with the statement coming from Arvind Kejriwal that not only the 13 seats of Punjab, but also that 14th seat, or that one single seat of Chandigarh Lok Sabha constituency, the Aam Aadmi Party will go solo there as well. All right, Ghazali, also it's interesting that in neighboring Haryana, Arvind Kejriwal has said that they will be fighting the state polls alone, but they will be allying with the Congress as far as the national polls are concerned, or the Lok Sabha elections are concerned. Because of course the Aam Aadmi Party's stand is that even in states where they have some sort of an organization, they want to fight elections. See, the politics of Haryana and Punjab is quite different, and also the positioning of Congress and Aam Aadmi Party in both states are different. In Punjab, they are in power. They have got 92 assembly seats. They have also won 1 by-poll elections in Jalandhar just the last year. So that gives them a lot of confidence that perhaps in the Lok Sabha elections, if they go alone, they will have sizable number of seats with them. But as far as Haryana is concerned, they have contested multiple elections in Haryana, many by-polls as well as assembly polls in alliance with JJP back then in 2019. But they could not make a considerable impact there, though the party claims that they have people on the ground, they have organizational structure. But as far as seats are concerned, obviously Congress has a larger base. Congress has a fair chance in Haryana as well. So when it comes to Lok Sabha elections, maybe the Aam Aadmi Party is willing to contest Haryana Lok Sabha elections in Haryana with the alliance. But as far as assembly elections are concerned, they certainly want to go alone, because that's also an exercise for a new party like Aam Aadmi Party to expand its base, that like the way they did in Gujarat, the way they did in Goa. So perhaps they're expecting a similar kind of response even in Haryana as well. Absolutely, and even in the Panchayat polls, the Aam Aadmi Party performed unexpectedly well. I think it came second as far as those Panchayat polls were concerned, so that was also interesting. Ghazali, thanks very much for joining us with that update. But moving now to our special report. Well, Uttar Pradesh is setting the trend with its rapid infrastructural development. Here's a look at Gorakhpur's infra development story. Take a look. उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण उभरता हुआ शहर है गोरखपुर। लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का केंद्र है गोरखपुर। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि भी है। गोरखपुर एक नई पहचान के साथ आज देश के फलक पर चमक रहा है। नमस्कार, मैं अनामिका जैनम्बर स्वागत करती हूँ आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरा उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश। किसी भी शहर के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत योगदान होता है। सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क इस बात को निर्धारित करते हैं कि विकास कैसा होगा। योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प था, जिसके कारण आज पूरा गोरखपुर 4 लेन से कवर हो चुका है। गोरखपुर से जोड़ने वाले शहर महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर, ये सब 4 लेन से जुड़ चुके हैं। गांवों तक 2 लेन की सड़क जाती है। लिंक रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ा जा रहा है। 50 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे शहर में हर चौराहे पर लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी। इन रोड्स जो मेन कनेक्टेड रोड्स हैं, वहाँ पे आपको न ट्रैफिक मिलता है, न वाटर लॉगिंग मिलती है, इजी हो गया। प्लस आपके जो ये इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह
अपग्रेड कर दिए गए हैं, प्लस ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ जो डाल दी गई हैं, जो अंडरलाइन वायर्स होती हैं, उनको ऐसे सारे यंगस्टर्स को हमें भी बहुत ईजी हो जाता है। सड़कें शानदार हैं तो रेलवे स्टेशन कैसे पीछे रह जाते। हाल ही में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों की सौगात गोरखपुर को मिली है। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास के लिए योगी सरकार ने 693 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अयोध्या धाम की तर्ज पर गोरखपुर जंक्शन में भी आपको परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। गोरखपुर के पास अब अपना खुद का हवाई अड्डा है। 2016 तक यहाँ केवल एक फ्लाइट आती थी, लेकिन आज हर दिन यहाँ से 14 उड़ानें भरी जाती हैं। यहाँ से हर दिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में उड़ानें भरी जाती हैं। थोड़े दिनों में यहाँ एक नया टर्मिनल भी बन रहा है यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर, और साथ ही यहाँ पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वेटिंग रूम और कैंटीन भी होगा। 2017 के पहले एक फ्लाइट कभी कभी आती थी, साल में 6 महीने चल पाती थी, और आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं। देश के हर प्रमुख नगर के लिए गोरखपुर से फ्लाइट है। कनेक्टिविटी होगी तो उद्योग धंधे भी होंगे। गोरखपुर में शहर के पास 8600 करोड़ रुपए की लागत से फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर पिपराइच में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री पर नए प्लांट लगाए गए हैं, जहां सल्फरलेस शुगर बनाई जाती है। गोरखपुर के विकास को सुनियोजित करने के लिए गीड़ा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी योजनाएं तैयार की हैं। यहाँ डेयरी उद्योग है, यहाँ कल कारखाने हैं, यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स को केंद्र बनाया जा रहा है। पूरे जिले में 50,000 करोड़ रुपए के उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले गोरखपुर के लोग माफियाओं